the point region. Good fielding by Amay Bhatkande to stop the ball well within the rope, giving away 2 runs. Saved 2 more runs with those 2 runs. Sudeep opens his account and takes the scorecard, ticking along to 15 runs. Good shot there, standing tall and driving it square of the wicket. Again, play with soft hands, wanting a single there, no says Samrani, and quickly Sudeep goes back to the crease. He wanted a single there. He didn't realize that Rohit Patil, the bowler himself, will field in his follow through. He thought that the cover fielder will come in from the edge of the circle. There was a run for the taking, but before the cover fielder could come in, Rohit Patil quickly came in and fielded it, importantly, a dot ball. Samrani was not interested in that run there at all, and Sudeep wanted to cross over to the other end. Sent back, safe enough. A dot ball. Well, again, standing tall there and defending on the crease, straight to the bowler himself in his follow through. Sudeep trying to spend some time there. Good thinking by that young batsman, young lad, Sudeep Sateri. Wants to play like a boss there. Other day when I was talking to him, he said that he's the boss. But he has a job on hand to do once again. Trying to step out there and trying to play a big one. Saw the ball slightly short of length there. Played with soft hands there towards the point area for a single as the batsman crossed over. With that single, it also completes the over. So after the completion of 3 overs, the scorecard reading 16 runs for the loss of 1 wicket. That 1 wicket to go down was of Ravi Ukli. Managed to get 2 runs of the 6 deliveries that he faced. And Sudeep Sateri and Virendra Samrani have put up 4 runs of 5 deliveries that they have faced together. Virendra Samrani is batting on 9 runs of the 7 deliveries, and Sudeep Sateri is batting on 3 runs of the 5 deliveries. Once again, it will be Anand Kumar to ball his bowling quota's second over and innings 4th over to the batsman Sudeep Sateri. Again, the interesting and attacking field by Majid Makandar, the captain of Zevar Gallery Diamonds. One slip in position and also a forward shot leg in catching position, pressurizing the batsman. Onto the back foot and yes, no. Oh, here my throw there, where the throw was going. What a throw that is. 5 runs for the taking. It looked like a slower shot run out, but 5 runs of the taking. All will go into the account of the batsman for those 5 runs. With those 5 runs, the scorecard moves to 21 now. What a throw that was by the cover fielder there. Maybe ball slipping out of his hand there. It was a run out. The batsman saying yes, no. In the end, both the batsmen were halfway down at the pitch. He would have thrown it at either end and there was a sure run out. But in course of trying to show, he threw it over the wicket-keeper's head and no backing as well by the square leg fielder Tahir Saraf there. 4 more runs for the taking. 5 in total. All those 5 runs to the batsman Sudeep. With that 5 scorecard moves to 21. That gets Virendra Samrani on strike. Trying to go down on one knee and trying to hit him, sweep him. Beaten all ends up there into the hands of the keeper Chetan Pangiri for a dot ball. Good bowling by Anand Kumar there to the batsman Virendra Samrani. Again going to the back foot and just playing with soft hands there towards long off. Arjun Patil comes in and fields. The batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 22 for the loss of 1 wicket. Oh, played with soft hands there, just beating the fielder at shot leg there. In the catching position, ball goes towards
Shot fine leg from square leg did Tahir Saraf come in and field. The batsman crossed for another single. Shot of length there, gone on the back foot and pulled it to mid wicket. Amay Bhatkande, the fielder there on the bounce. Does he field well enough to give away a single? That is why the fielder is kept there at the deep mid wicket for that pull shot that these two batsmen play. That gets Sudeep on strike. Played with soft hands, wanting a single this time. Straight to the fielder, direct hit, but in vain. Sudeep running well enough and diving as well. And the fielder Fran maybe not throwing this time. Prashant it is. 1 run for the taking. A good running, I would say. With that single, it also completes the over, and the scorecard reading 25 runs after the completion of 4 overs for the loss of 1 wicket. What a shot that is at the bat of Virendra Samrani there. Sudeep there. Wideish of third man for a boundary. With that boundary, the scorecard for the ticks along to 29. And Sudeep Satari quickly moves to 14 of the 9 deliveries that he has faced. Watchway left alone. Good bowling and good comeback there by the bowler Akash Pattar. After being hit for a boundary, the ball pitching and leaving the batsman away. Outswinging delivery into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 29 for the loss of 1 wicket. Good shot there, straight to the fielder there. This time Sudeep trying to pull it to the fielder at square leg in front of the umpire. Straight to the field, Anand Kumbar. Second wicket goes down in the form of Sudeep Satari. Was looking good there, trying to pull it. 17 runs of partnership between Sudeep and Virendra. And Sudeep's wicket goes down as the second wicket for Vishnu Strikers. Well, it's Vijay Kumar Patil now walking onto the crease. Vijay Kumar Patil stepping down from captaincy and handing it over to Ravi Ukli. And Vijay Kumar Patil walks onto the crease at the fall of the second wicket in the form of Sudeep Sateri there to join the batsman Virendra Samrani.
Well, Akash Pattar there pitching up to the batsman Vijay Patil. Oh, no slipping position, trying to drive him there, got a thick edge of the bat and going towards the third man. Time the fielder fields it, tight Saraf, the batsman cross over for a single. With that single, Vijay Kumar Patil opens his account and takes the scorecard further ticking along to 30 runs. Played with soft hands there, Virendra Samrani. At the time the fielder comes in and fields, the batsman cross for a single. With that single, it also completes the over. So after the completion of 5 overs, a scorecard reading 31 for the loss of 2 wickets. They're going at a run rate of 6.20 runs per over. Vijay Kumar Patil is batting on 1 run and Virendra Samrani is batting on 12 runs. Wide there, wide signalled by the umpire. Prashant Mutkekar comes into the act, their left arm bowler. They want to take the advantage of bowling with the left arm and bowling into the right-handed. But before he starts with a wide there, another extra added on to the total. This time 32 there. Trying to ball sweep him, up goes the finger there, trying to go across, sit down and playing across the line. Virendra Samrani trying to paddle sweep him, missed it completely. It was judged LBW in front of the crease. Virendra Samrani goes down as the third wicket to Bishop Strikers.
down the leg side there, but I think it was of the bat. Lucky enough, the ball not going down towards fine leg. It would have been very difficult for Tahir Saraf at short fine leg as he's up in the circle, but lucky enough, he also gets a big smile on his face. Well played by Aditya Kalpatri towards wideish of long on, wanting 2 and 2 for the taking. Easy 2 runs there. Akash Pattar coming in from long on, trying to field it with single-handedly. A fumble there, not a clean take and pick up. Meanwhile, the batsman capitalizing and going for that extra run and 2 runs for the taking. Good running in between the wickets by these 2 batsmen, and the scorecard for the ticks along to 34. Played with soft hands there again to the fielder Anand Kumar there in the point region. Wide there, wide signal by umpire, another extra added on to the total with that extra. The scorecard for the ticks along to 36. Vijay Kumar Patil is batting on 1 run of the 2 deliveries and Aditya Kalpatri is batting on 3 runs of the 3 deliveries. 3 balls, 3 runs. Aditya Kalpatri, 3 balls, 3 runs. Once again trying to play with soft hands towards the gully region. The fielder coming in and fielding Rohit Patil there for a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 6 overs. So scorecard reading 36 for the loss of 3 wickets. For those of you who have joined us late this afternoon, to tell you that Vishu Strikers won the toss and elected to bat first, and in doing so, they have lost 3 wickets and put up 36 runs on the board. At the completion of 6 overs, they are currently going at exactly 6 runs per over. Vijay Kumar Patil is batting on 1 run of the 3 deliveries and Aditya Kalpatri is batting on 3 runs of the 3 deliveries. Just 4 runs of partnership between Aditya Kalpatri and Vijay Kumar Patil. They have a job on hand to do of building an innings and partnership for themselves and the team. Akash Pattar again comes into the act there. Akash Pattar to the batsman Aditya Kalpatri. Again this time trying to go to the back foot and cut him there. The ball going towards the fine leg. Wicket keeper running behind it. Hey, wide throw there. Slightly fumble as well, wanting another run there. Nagendra Patil missing it completely. A very bad fielding, a bad throw there by the wicket keeper. More than the bad throw, it was the bad backing up by the fielder Nagendra. And 1 more run stolen by these batsmen. Good running, I would say, for that extra run that they took. With those 2 runs, the scorecard ticks along to 38. Good shot there. What a shot by Aditya Kalpatri, going down and 1 knee, touching forward and driving it square of the wicket towards the deep point region for a boundary. With that boundary, the scorecard ticks along to 42 and Aditya Kalpatri goes to 9 runs of the 5 deliveries that he has faced. Vijay Kumar Patil is batting on 1 run. Again pitching up to the batsman. Aditya trying to drive him. Beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball there. Brave enough for the bowler to pitch it up to the batsman, asking him to drive there again. Good bowling, I would say, by
by Akash Pattar to the batsman Aditya Kalpatri, who's batting on 9 runs of the 6 deliveries. Again, this time ball slightly keeping lower than anticipated into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 42 for the loss of 3 wickets. Again, showing the full place of the ball and driving it towards the sweeper cover region. Amay Bhatkande comes in and fields on the bounce to the wicket keeper. Good fielding and good throw as well. One more for the taking with that single. The scorecard further ticks along to 43 for the loss of 3 wickets. With that single, Aditya Kalpatri moves to 10 runs and Vijay Kumar Patil is batting on 1. Vijay Kumar to face Akash Pattar. Again, played with soft hands, wanting to play there a bit different kind of a shot by Vijay Patil. 1 run for the taking till the fielder fields from long off. Majid Makandar there. With that 1 run, it also completes the over. So after the completion of 7 overs, scorecard reading 44 for the loss of 3 wickets. 7 overs have been bowled and the scorecard reading 44 for the loss of 3 wickets. Aditya Kalpatri is batting on 10 runs of the 8 deliveries and Vijay Kumar Patil is batting on 2 runs of the 4 deliveries. And played with soft hands there, Vijay Patil wanting to, but good fielding by the fielder. The 1 run for the taking with that single that they have to settle down. With that single, the scorecard ticks along to 45 for the loss of 3 wickets. Again a good ball there, a dot ball into the hands of the keeper for a dot ball. Aditya Kalpatri trying to drive in there. Beaten all ends up into the hands of the keeper. Stepped out there right over the bowler's head, just a spectator, the mid-on and mid-off fielder. Good shot there by Aditya Kalpatri for a boundary. With that boundary, the scorecard ticks along to 49. And Aditya Kalpatri goes to 14 runs of the 10 deliveries. Scorecard reading 49 for 3. Once again, watchfully played there for a dot ball.
Again, cut shot there to the sweeper cover as the batsman crossed for a single. With that single, the scorecard ticks along to 50 runs. Another delivery before the completion of this over. Played with soft hands there and stick to the fielder at the short cover, wanting another single. One more for the taking, and they take it up. This is sloppy fielding there by Nagendra. He had fielded well enough. He need not have to throw. He threw it, and one more for the taking. With that, 2 runs. It also completes the over. After the completion of 8 overs, the scorecard reading 52 for the loss of 3 wickets. Vijay Kumar Patil is batting on 5 runs of the 6 deliveries, and Aditya Kalpatri is batting on 15 runs of the 12 deliveries. As there would be change in bowling, there will be change in commentary. I asked my co-commentator Pramod Jappe to take on in Hindi. धन्यवाद चेतन बेलूर। तो अब विश्व स्ट्राइकर्स भले ही विकेट खोए हो 3, लेकिन 52 रन तो बना रही है 8 ओवर में। विजय पाटिल और आदित्य कल्पत्री डटे हैं मैदान पर और इस जोड़ी पर बहुत कुछ जिम्मेदारी है कंधों के ऊपर उनके। अब देखेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल तो रहे हैं इस वक्त ये 2 बल्लेबाज। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं गेंदबाज आनंद कुंभार। ओ टर्न बहुत अच्छी ले रही है गेंद आनंद कुंभार की। कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है आदित्य कल्पत्री के पास। डॉट गेंद पूरा बोल्ड हुए जगह बनाकर खेलने की कोशिश। सीध में गेंद को डाल रहे थे और आदित्य कल्पत्री बोल्ड हुए। चौथे विकेट का नुकसान होता हुआ विश्व स्ट्राइकर्स के टीम का। आदित्य कल्पत्री अच्छा खेल तो रहे थे जरूर, लेकिन गेंद के मेरिट के हिसाब से वो खेल नहीं पा रहे थे। जो गेंद अंदर आ रही थी उस गेंद को वो जगह बनाकर खेलने की कोशिश में बुरी तरीके से बीट हुए और क्लीन बोल्ड आदित्य कल्पत्री। अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अचानक विकेट अपना दे बैठे आदित्य कल्पत्री। आउट होने से पहले 2 चौकों की मदद से 15 रन वो बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ी पारी की अपेक्षा जरूर कर रही थी टीम। धीरे धीरे में वो लय में भी आ रहे थे, लेकिन आनंद कुंभार एक अच्छे गेंदबाज हैं और जब भी कभी गेंद कप्तान ने उनको सौंपी है उन्होंने कभी निराश नहीं किया है अपनी टीम के लिए। तो आनंद कुंभार को मिलने वाली ये पहली सफलता। प्रशांत मुदकेकर ने 1 विकेट, रोहित पाटिल ने 1 विकेट, आकाश पत्तर ने 1 विकेट लिया है। तो सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लेकर अपना योगदान दिया है और रन संख्या 52 है। अब 4 विकेट खो रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। विजय पाटिल का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज आए हैं। आकाश कटामड़े। विजय पाटिल, आकाश कटामड़े कहां तक अपनी टीम को ले जाते हैं ये देखना है, क्योंकि ये एक अच्छी जोड़ी है बल्लेबाजों के हिसाब से। अगर हम देखेंगे बहुत अच्छी क्षमता है दोनों के बल्ले में। लेकिन ज़ेवर गैलरी डायमंड्स का जहां तक सवाल है, 2 करारी शिकस्त मिलने के बाद अब आज वो अलग योजना लेकर मैदान पर आई है, एक अलग दृष्टिकोण लेकर मैदान पर आई है और अब तक 52 रन दे रहे हैं और 4 कीमती विकेट हासिल कर रही है। पारी का 9वां ओवर चलता हुआ आनंद कुंभार का। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, धकेला उस गेंद को कवच के इलाके में। 1 रन बनेगा। खाता खोलने में कामयाब।
आकाश कटामले। पारी की रन संख्या बनी है विश्व स्ट्राइकर्स 53, 4 विकेट खोने के बाद 53 फॉर 4। वो बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल नीचे रही। विजय पाटिल पहले पड़ गए उस गेंद को। बैकलिप तो उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की और वैसे ही खेला सीधी बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। छकाने में कामयाब। अच्छी गेंद, अच्छी फ्लाइट, अच्छी टर्न, अच्छी बाउंस। लगातार सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं विजय पाटिल को आनंद कुंभार। अच्छी गेंद, फिर एक बार फ्लाइटेड गेंद डाली, रन चुराने में कामयाब। अच्छी तालमेल, समझबूझ, कवच के इलाके में हल्के हाथों से धकेल कर 1 रन पूरा किया। तो कामयाब ओवर समाप्त हो रहा है आनंद कुंभार का। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त है 9 और 9 ओवर के बाद 54 रन बना रही है 4 विकेट के नुकसान पर। चौवन रन 4 विकेट के नुकसान। फिर एक बार मौसम थोड़ा सा करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। काले बादल जैसे दोपहर को छा रहे हैं। बहुत नुकसान हो रहा है खेल का। लगातार 2 दिनों से दोपहर का मैच हो नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात तो नहीं है क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट के लिहाज से। लेकिन नैसर्गिक जो है बारिश का आना, उसको हम तो रोक नहीं सकते। अपेक्षा हमारी यही है कि 2-3 घंटे बारिश ना हो, कम से कम ये मैच पूरा हो जाए। लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं ताहिर सराफ। अपने कोटे का पहला पारी का 10वां ओवर लेकर विजय पाटिल सामना करेंगे। शॉर्ट आर्म पुल खेला है मिड विकेट के इलाके में। डीप में से जोरदार दौड़ कर आए हैं अमय भातकांडे। 1 रन बनेगा। अच्छी फील्डिंग की, अच्छा थ्रो किया उन्होंने। इस 1 रन की मदद से रन संख्या अब आगे बढ़ रही है विश्व स्ट्राइकर्स की 55, 55 फॉर 4। बैकफुट पर गए, जगह तो जरूर बना रहे थे आकाश कटामले, लेकिन हैंड वक्त पर उन्होंने उस गेंद को खेला है उस कवर्स के इलाके में, एक्स्ट्रा कवर पर। वहां पर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं बना। बैकफुट पर गए, जगह बनाई आकाश कटामले, लेकिन नीचे रही गेंद और नीचे रहने की वजह से गेंद को खेल नहीं पाए। चकमा दिया गेंद ने। चेतन पांगेरे ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। और स्क्वायर ड्राइव किया। स्वीपर कवर के खिलाड़ी आए हैं आनंद कुंभार, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन आकाश कटामले ने दौड़कर पूरा किया। अब रन संख्या आगे बढ़ रही है। अब तक 56, 4 विकेट के नुकसान पर विश्व स्ट्राइकर्स। तो दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा है, ज्यादा कोई हाथ खोल कर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी दोनों छोर से चल रही है। सिंगल्स से काम चलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाजों को। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, जगह बनाकर इस गेंद को कवच के इलाके में खेला। पॉइंट पर से फील्डर ने झपट्टा मारा, गेंद को रोका, लेकिन 1 रन का इजाफा होने के बाद रन संख्या 57, 4 विकेट खोने के बाद विश्व स्ट्राइकर्स। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, कवच के इलाके में पंच किया। स्वीपर कवर पर खिलाड़ी हैं, 1 रन बनेगा। रन संख्या बनी है 58, 58। 10 ओवर का खेल अब समाप्त हुआ, जलपान का समय होता हुआ। $5.80।
के रफ्तार से 58 रन बना रही है। 3 रन बनाकर आकाश कटामड़े खेल रहे हैं, 8 रन बनाकर विजय पाटिल खेल रहे हैं। जहां तक बॉलिंग की बात करें तो प्रशांत मुतकेकर ने 1 विकेट लिया, रोहित पाटिल ने 1 विकेट लिया रवि उकड़ी का। वीरेंद्र सामरानी का विकेट ले रहे थे प्रशांत मुतकेकर। आकाश पत्तार ने विकेट लिया सुदीप सातेरी का, और आदित्य कलपत्र का विकेट लिया था आनंद कुंभार ने। तो अब तक 5 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें से 4 गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिलता हुआ। ताहिर सराफ को अभी तक विकेट नहीं मिला, लेकिन बड़ी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। पहले ओवर में ज़्यादा रन नहीं खर्च किए, बल्कि 4 ही रन खर्च कर रहे थे। अब जलपान के बाद खेल कैसा होगा इस पर बहुत कुछ निर्भर है विश्व स्ट्राइकर्स के लिए। दोनों टीम के लिए यह मैच मानो करो या मरो का मैच है। जीत आपको वर्तमान श्रृंखला में जीवित रखेगी, हार आपको वर्तमान श्रृंखला से धीरे धीरे बाहर धकेल देगा। तो हर संभव कोशिश करेंगे दोनों टीम्स अपनी प्रतिभा से कहीं ऊंचा प्रदर्शन करने की इस मैच में। और जब तक ये मैच पूरा नहीं होगा तब तक कह नहीं सकते कि मैच का नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जीत अनिवार्य है दोनों टीम्स के लिए वर्तमान श्रृंखला में। KR शेट्टी मेमोरियल T20 ट्रॉफी दूसरा पर्व चलता हुआ यूनियन जिमखाना के मैदान पर। और बड़े अच्छे लीग तो चल रहे हैं ज़रूर, लेकिन खलल तो ज़रूर हुई है 2 दिन दोपहर के समय में बारिश की वजह से। जलपान का समय, रन संख्या बनी है 10 ओवर 58 रन 4 विकेट। विश्व स्ट्राइकर्स टॉस जीता था विश्व स्ट्राइकर्स के कप्तान ने रवि उकड़ी ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी ज़रूर, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी हुआ। पहला विकेट 12 पर गिरा, दूसरा 29 पर गिरा, तीसरा 32 पर गिरा, और चौथा विकेट गिरा 52 पर। अब स्कोर है 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जलपान का समय समाप्त हुआ, और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं हमारे अंग्रेजी के कमेंटेटर चेतन बेलूर। Well, with 2 dot balls there, Anand Kumbar to the batsman. Played with soft hands again towards a direct hit, but survives. No, says the umpire. 1 more for the taking. With that single, the scorecard ticks along to 59 runs. Watchfully played there of the front foot, a forward defensive shot for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 59 runs. Again with soft hands there, onto the short point region for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 59. Of course, a dead ball there. The ball missing it in his run up.
Good ball there again. A turn and bounce to the keeper. Vijay Kumar Patil going to the pitch of the ball and trying to defend him. Beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, it also completes the over. So after the completion of 11 overs, the scorecard reading 59 runs for the loss of 4 wickets. Anand Kumar has bowled 4 overs, given away 20 runs and picked up that 1 wicket at an economy of 5 runs per over. Good bowling there. And now it is Tahir Saraf coming into the act. Tahir Saraf comes up with his bowling quotas first over and second over of his bowling quota, and innings 12th over to the batsman Akash Katamle. Trying to hit a big one there. What a shot that is at the bat of Akash Katamle for a huge 6. With that 6, the scorecard ticks along to 65. Good shot there at the bat of Akash Katamle. With that 6, Akash Katamle goes to 10 runs of the 9 deliveries and 65 on the board. Trying to go onto the back foot and cut him there. Beaten all ends up taking the edge of the bat and the ball bouncing into the hands of the keeper for a dot ball. Lucky enough the ball not hitting the stumps after hitting the edge of the bat there. Once again Tahir Saraf to Akash Katamle. Outside the off stick, trying to cut him there. Beaten all ends up once again a dot ball. Good bowling there by Tahir Saraf. Onto the back foot again there, beaten by the batsman. Good bowling there by Tahir Saraf there, keeping the batsman in check and also beating him for a dot ball. Onto the back foot and played off his pads. Arjun Patel coming in from square leg, deep square leg, and fields it. One for the taking. Good fielding, I would say, on the bounce. The throw comes to the keeper Chetan Pangire. With that single, the scorecard ticks along to 66. For the loss of 4 wickets. Again, trying to cut him off the back foot there. Beaten all ends up into the hands of the keeper. Vijay Kumar Patil annoyed with himself for trying to cut him. Beaten there into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, score stands at 66 after the completion of 12 overs. 10 overs have been bowled and the scorecard reading 66. Loss of 4 wickets. Majid Makandar, the captain, comes into the act now with his bowling quotas first over and innings 13th over to the batsman Akash Katamle. Try to hit a big one, cries of catch it there, but the ball will land in no man's area and fumble there by Amay Batkande, the fielder. You overran the ball there, the ball spinning after bouncing. So 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard ticks along to 68. Majid Makandar, interesting to see the leg spin bowler flighting the delivery to the batsman Akash Katamle. Played with soft hands there, straight to the fielder. And 1 more for the taking. Prashant Mutkekar, the fielder there in the point region.
1 run for the taking as the batsman crossed over. That gets Vijay Patil on strike to face Majid Makhandar. Flighted delivery, cross batted shot there, pulling it from middle end off towards wideish mid wicket. Just for a single. Good fielding by the fielder there at deep mid wicket area. With that single, the batsman have to settle down. The scorecard reached 70 runs for the loss of 4 wickets. Good shot there, flighted delivery and driven uppishly towards sweeper cover. Arjun Patil. Again off the back foot, trying to pull him out, play him straight to the bowler himself in his follow through, Majid Makhandar. Played it uppishly, cries of catch it straight to the fielder there. Akash Pattar, the fielder. So Vijay Kumar Patil trying to get some runs, trying to play a lofted drive. Goes straight down to the fielder. Akash Pattar in front of the dugout at long on. So Vijay Kumar Patil goes down as the 5th wicket. Thirteen overs have been bowled and the scorecard reading 71 for the loss of 5 wickets. It is Madan Belgaonkar, Maddie, joins on to the crease to join Akash Katamble, who's batting on 15 runs of the 16 deliveries, and it would be Akash Katamble to face Tahir Saraf. Tahir Saraf comes up with his bowling quotas, 3rd over and innings, 14th over to the batsman Akash Katamble. And easy catch there put down by Tahir Saraf. He had all the time in the world to take that. He will not sleep tonight, let me tell you, because he's put it down. An easy catch, a lollipop goes down begging. It would have gone down so easily, that wicket in his name. Majid Makhandar giving the ball to Tahir. Tahir tossing it up. Maddie to face Tahir. Again trying to drive him there, Maddie. Beaten all ends up into the hands of the keeper Chetan Pangire for a dot ball. Well, Tahir Saraf had all the time in the world to take that catch. He didn't expect maybe. He took it more easier than anticipated. The ball just popping out of his hands. This time he does it. A clean ball. Madan Belgaonkar trying to go onto the back foot and drive him. Beaten all ends up. Clean ball there. The first wicket picked up in the name of Tahir Saraf, that of Maddie. So the 6th wicket goes down in the form of Madan Belgaonkar for Vishnu Strikers.
Hardik Oza there. Onto the crease at the fall of Madan Belgaonkar. Madi. And Hardik Oza carefully playing there, just tapping it, Neglik around in the short cover region for a dot ball. Tahir Saraf once again to Hardik Oza. Down the leg side there, we got to wait for the umpire signal. Trying to field it, Amay Badkande with some football skills. Just ball not coming into his hand there. Prashant Mutkekar. Straight to the bowler himself in his follow through all along the carpet. Was played by Hardik Oza, the bowler fielding of his own bowling for a dot ball. That dot ball score still stands at 75 for the loss of 6. Going on the back foot and trying to cut him there, beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball score still stands at 75, and it also completes the over. After the completion of 14 overs, the scorecard reading 75 for the loss of 6 wickets. Hardik Oza still yet to open the account for himself and take the scorecard ticking along after 3. And Akash Katamble is batting on 16 runs of the 17 deliveries that he has faced. Flighted delivery there, wide-ish off, long off. Amay Bhatkande just a spectator there. Good shot there, lofted shot, lofted drive in the extra cover region by the batsman Akash Katamble for a boundary. With that boundary, the scorecard moves to 79 now. Going on to the back foot and again playing there, warning a single, a direct chance, a hit, he got the throw at the wrong end there. And the batsman wanted a run, but sent back by Akash Katamble. He knew that there was no run for the taking. Another dot ball. Majid Makandar to Akash Katamble. Short pitch delivery, again pulled it towards mid-wicket. Fielder coming in from deep and fielding wanting to, but to 85, and it also completes the over. So after the completion of 15 overs, the scorecard reading 85 runs for the loss of 6 wickets. For those of you joined in late, to tell you that Vishnu Strikers, the captain Ravi Ukli, won the toss and elected to bat first, and in doing so they managed to put up 85 runs for the loss of 6 wickets. A current run rate is 5.67 runs, and if they go at the same run rate, they should somewhere reach around 115 or 120 runs. Akash Katamble is batting on 25, good 25 runs of 21 deliveries with 2 boundaries and 1 6. Hardik Oza is batting on 1 run of the 5 deliveries.
A partnership also of 13 runs between these two batsmen, between Akash Katamble and Hardik Oza. Again watchfully played by Hardik Oza off the front foot of the bowling of Tahir Saraf. The ball going towards long gone. The fielder coming in and fielding. One more for the taking with that single. The scorecard further ticks along to 86. And if you see that any moment it might rain. And all the groundsmen, support staff waiting there at the boundary line with the covers on. And played softly with gentle push driven all along the carpet towards long on there for a single. Scorecard ticks along to 87. Well, we thank all the men who are there from the groundsman Anil to Jyoti Patil to the chairman Pranay to Puneet. Everyone helping there, Katappa and so many other, even the security guards, securities. All the support staff who are all helping us, thank you very much for you people being so kind and generous. You're just waiting at the boundary line in case there's rain. Thank you, we really appreciate that. Coming back to the match, Tahir Saraf there to the batsman Akash Katamble. Going on the back foot and cutting him, got an inside edge. Lucky, you could say, the ball not hitting the stumps after getting an inside edge. Importantly, a dot ball. With that dot ball, score still stands at 88 runs. Played it upishly towards the mid-wicket area. Square leg coming in quickly from deep and trying to field it. Amay Bhatkande there this time doing wonderful there just to give away a single. Good piece of fielding by Amay Bhatkande from deep square leg for a single. With that single taken, the scorecard for the Limbs along to 89. Onto the back foot, played with soft hands, wanting a single there. Nagendra fields it, but in vain. Good covering and backing by Tahir Saraf. 1 run to finish that over, the last ball. And with that, 16 overs have been bowled and the scorecard reading 90. Tahir Saraf bowled 4 overs, gave away 20 runs, picked up 1 wicket at an economy of 5 runs. Good bowling there by Tahir Saraf, bowled 4 overs and 20 runs. And that wicket of Madan Belgaonkar. The two batsmen out there in the middle are Akash Katamble, who's batting on 27 of 24 deliveries, and Hardik Oza is batting on 4 runs of the 8 deliveries. And the partnership between Akash Katamble and Hardik Oza is 18 runs of 15 deliveries. Again trying to hit him, drive him wide, been asked, but umpire says no, the ball turning and bouncing. You really can't ask the umpire for the wide there. Majid flighting the delivery, all happening in the right spirit of the game for a dot ball. This time again trying to paddle sweep him, going to the pitch of the ball, beating completely Hardik Oza, getting it on his belly there, the ball turning. Good bowling there by Majid Makhandar, flighting the delivery. Once again, Majid to Hardik Oza. Again hit it big one there towards mid-wicket, the fielder coming in. The odd bounce doing a good job and a trick there just to give away a single. Good piece of fielding there by Nagendra at the deep mid-wicket area. With that single, the scorecard further ticks along to 91 for the loss of 6 wickets.
trying to reverse sweep it, beaten completely there. Akash Katamble doing all the things that are possible, and he wants to pile up some runs and gather some runs there. Trying to reverse sweep him, beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Short of length there, pulled it towards long on. Lofted drive or a pull, all cross-batted shots there. They don't mind as far as the runs are coming. With that one run, they have to settle down, and the scorecard reads to 92 for the loss of 6 wickets. Majid Makhandar again flighting the delivery, asking the batsman to drive there off the off stump. But Hardik was trying to play on the onside, beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 17 overs. Scorecard reading 92 for the loss of 6 wickets. Hardik Oza is batting on 5 runs of the 12 deliveries, and Akash Katamble is batting on 28 of 26 with 2 boundaries and 1 6. The partnership between Hardik Oza and Akash Katamble is good, 20 runs. 20 runs of partnership between Hardik and Akash Katamble. Well, there's a change in bowling now, and it is Rohit Patil coming into the act there. Rohit Patil comes up with his bowling quotas, 3rd over and innings 18th over to the batsman Akash Katamble. Rohit has bowled 2 overs, given away 8 runs, picked up that 1 wicket into his account and name, bowling at an economy of 4 runs per over. Rohit Patil to Akash Katamble. Again, cutting him, driving him towards the sweeper cover region. What a shot that is at the bat of Akash Katamble. Good shot there. Boundary signaled by umpire Sadiq Kitur, acknowledged by my scorer. 4 more for the taking. With those 4 runs, the scorecard now moves to 96 now. Runs coming thick and fast at the bat of Akash Katamble. With that boundary, Akash moves to 32 runs there. Width been offered by the bowler to the batsman, driving it to the sweeper cover region for a boundary. Once again, Akash to face Rohit. Played with soft hands there, steering it down towards the gully region. Prashant Mutkekar fields. The batsman crossed for a single. With that single taken, the scorecard moves to 97 for the loss of 6 wickets. Rohit Patil to ball to the batsman Hardik Oza. Played with soft hands there. Rohit Patil fielding his own bowling, trying to have a throw and shy. All in the right spirit of the game. They know each other. Hardik Oza was pretty cool and calm when he played that shot and fielded by the bowler for a dot ball. Again played it on to the long on there. Hardik Oza for a single. With that single, the scorecard ticks along to 98. What a shot that is. Akash Katamble once again straight over the bowler's head for a boundary. Good shot there by Akash Katamble. Boundary signaled. With that boundary, 100 comes up for Vishu Strikers. 102, make it 102 there for Vishu Strikers at the bat of Akash Katamble. And Akash Katamble goes to 37 of 29 deliveries. Good 37 runs that he has piled up for himself and the team. 17.5 overs have been bowled, and the scorecard reading 102 for the loss of 6 wickets.
Again outside the off stick, wanting to drive in, beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. With that dot ball, it also completes the over after the completion of 18 overs. A scorecard reading 102 for the loss of 6 wickets. And wicket goes down, begging there, wanting to step out and drive him. Hardik Oza was completely beaten by the flight and also the turn doing the job there. Majid Makandar, the captain, picking that wicket there. Majid gets a big smile also. He knows that he's got that wicket. He's played plenty of cricket here. You can say he was brought up here, born and brought up at this ground here. He knows all the tricks of the trade, Majid Makandar. So Hardik Oza got good 10 runs there, 10 runs of the 16 deliveries, and 7th wicket goes down in the form of Hardik Oza, 10 runs of 16 deliveries. Vinit Adurkar comes onto the crease at the fall of Vinit Adurkar onto the crease at the fall of Hardik Oza, and he would be playing the captain Majid Makandar. Vinit Adurkar, another explosive batsman. Well, watchfully played there by Vinit Adurkar. The ball slightly keeping lower than anticipated and turning as well after pitching. Majid Makandar once again to the batsman Vinit Adurkar. Oh, this time turn and bounce to the batsman there. Chetan Bangere doing well enough to take that ball. Good bounce there for Majid for a dot ball. This time is clean ball there, trying to get a big run, so trying to drive him up, creating some room. The ball keeping low this time, getting a thick edge, and clean bowled by Majid Makandar. So Majid picks up his second wicket in this over. He's got 3 wickets and 2 wickets in this over itself. So it is Anil Gowda Patil walking onto the crease at the fall of Vinit Adurkar goes back to the dugout with a big duck and 0 for himself without tickling the scorers. 8th wicket goes down, 102 for 8 in 18.4 overs. Anil Patil walks onto the crease at the fall of Vinit Adurkar. Once again trying to hit a big one there. Anil Patil beaten all ends up into the hands of the keeper
for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 102 for the loss of 8 wickets. 18.5 overs have been balled. Well, again, it's a maiden wicket, maiden, and 2 wickets in this over by the captain. Leading from the front, Majid Makhandar. And he's balled 4 overs, given away 17 runs, 1 maiden, and picked up 3 wickets. Wonderful piece of bowling there by the captain, Majid Makhandar. Maiden wicket. 19 overs have been bowled, and the scorecard reading 102 for the loss of 8 wickets. Current run rate is 5.37, and at this run rate, they can just get some runs up to 108 or 110 runs. 19 overs, 102 for 8. Well, the last over of the innings, it would be Rohit Patil. Rohit Patil comes into the act with his bowling quotas. 4th over and innings 20th over to the batsman Akash Katamble, who's batting on 37 of 30 deliveries. Well played for his 37 there, Akash Katamble of 30. Rohit Patil to Akash Katamble. Two runs wanting there, and the ball hitting. Well, it is not intentional though. The ball hitting the batsman. With 2 runs for the taking. With those 2 runs, good shot there by the batsman. The scorecard reads to 104, and Akash Katamble goes to 39 of 31. Shot of length there, trying to play onto the onside, trying to pull him there, hook him. Beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Good bowling there by Rohit Patil, pitching it short, banging in short, and bouncing the ball to the batsman to play that shot. Akash Katamble trying to pull it, beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Again, short pitch delivery, cries of catch it. Majid Makhandar takes the catch divingly, made it look so difficult in the end. It was an easy catch, but made it look so difficult. And a good catch, I would say, by Majid Makhandar to pick that wicket of Akash Katamble in the form of 9th wicket. And the last man walking in is Akash Katamble. Got good 39 runs of 33 deliveries with 4 boundaries and 1 6. Well played for his magnificent 39 runs of 33 deliveries. Well played, Akash, for that 39 runs. And it is Furqan Mullah. Furqan Mullah comes onto the act. Furqan Mullah. Trying to hit a big one there. Again, Anil Patil swinging the bat and missing it completely for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 104 for the loss of 9 wickets. Can they at least go past the psychological barrier of 110 runs? Only time will tell. 19.4 overs have been bowled. 2 more deliveries before the completion of this over. Can they get 1 or 2 boundaries in those 2 deliveries left over? So, Anil Patil to face Rohit Patil. Again, full pitch delivery, driven up pitchly towards sweeper coverage. In the fielder comes in Prashant Mutkekar and fields. 2 for the taking, and up goes the finger. The wicket goes down. So all out there for 105 runs. Wishwood strikers have put up 105 after the completion of their 10 wickets in 19.5 overs. Well, to tell you that 19.5 overs have been bowled, and Wishwood strikers, after winning the toss this afternoon, opting to bat first. They've just got 105 on the board.
and they have lost all their 10 wickets. Well, we'll be back in a moment for some time. A man of the moment right now is Akash Katamle, got 39 runs of 33 deliveries. Well, we have a break of 10 minutes. We'll join you back in 10 minutes time. Thank you.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. तो 5 ओवर में उनकी पारी सिमट गई थी। आकाश कटामड़े अकेले ऐसे थे बल्लेबाज जिन्होंने 39 रन बनाए हैं। अनिल गौड़ा पाटिल पारी की गेंदबाजी शुरू करेंगे। चेतन पांगिरे हैं और चेतन पांगिरे का साथ देने के लिए अनिल गौड़ा पाटिल। ईश्वर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन हल्के से धकेल कर खेला पॉइंट की दिशा में। ओझा ने झपट्टा मारा, एक हाथ से पिकअप और थ्रो किया उन्होंने, लेकिन निशाना सटीक नहीं लगा, लेकिन खाता खोलने में कामयाब हुए हैं चेतन पांगिरे। और इस 1 रन की मदद से जेवर गैलरी डायमंड्स ने भी खाता खोला 1 रन बगैर किसी नुकसान के। गणेश जामड़े आए हैं स्ट्राइकर एंड पर, अब सामना करेंगे अनिल गौड़ा पाटिल का। एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ के इलाके में खिलाड़ी हैं। ऑन साइड पर फाइन लेग डीप मिड विकेट मिड ऑन के इलाके में खिलाड़ी हैं।
ओ बहुत खराब गेंद डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्विंग हुई, ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा खिला रहे थे अनिल गौड़ा पाटिल, लेकिन बहुत गेंद बाहर की तरफ गए, तकरीबन पहले स्लिप के ऊपर आकर उस गेंद को रोकना पड़ा विकेट कीपर को, लेकिन घाटे का सौदा कर रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। रन संख्या अब जेवर गैलरी डायमंड्स की बनी है 2 रन बिना कोई विकेट खोकर। ओ यॉर्कर बहुत बढ़िया गेंद थी, क्या बढ़िया स्ट्रोक गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधे ब्लॉक होल में गेंद को डाला, लेकिन उतनी ही सफाई के साथ खोद कर खेलने में कामयाब हुए हैं गणेश जामड़े। कोई रन तो नहीं बना, गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है अनिल गौड़ा पाटिल के पास। तो बारिश की संभावना अब कम होती जा रही है। ओ छकाने में कामयाब, क्या बढ़िया गेंदबाज है अनिल गौड़ा पाटिल। सीम पर पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी कोन बनाकर गई, गणेश जामड़े के पास कोई तोड़ नहीं था, उस गेंद के लिए कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, चकमा दिया गेंद ने, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। अब तक जेवर गैलरी डायमंड्स 2 रन बना रही है, कोई नुकसान नहीं हो उनका, 1 वाइड और 1 रन चेतन पांगेरे के खाते में जाता हुआ। अभी तक गणेश जामड़े ने अपना खाता नहीं खोला, सामना करेंगे अनिल का। ऑफ द टोस फ्लिक किया है इस गेंद को मिड विकेट के इलाके से, फील्डर आए हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन 1 रन के साथ गणेश जामड़े खाता खोल रहे हैं और पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 3 रन बिना किसी नुकसान के। जेवर गैलरी डायमंड्स को 106 रनों की चुनौती पार करनी है। तो हेलमेट मंगवाया है चेतन पांगेरे ने, क्योंकि तेज गेंदबाज हैं अनिल गौड़ा पाटिल, तो किसी प्रकार का वो जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं, इसलिए सही निर्णय ले रहे हैं वो कि हेलमेट लेकर खेलना सबसे सुरक्षित है क्रिकेट में। जब आपकी बल्लेबाजी हो रही हो, या फिर आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, या फिर आप स्लिप पॉइंट फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे हो, तो निश्चित आपको हेलमेट लेकर खेलना चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, अच्छी स्विंग, अच्छी गति, गेंद को खेलने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्ला गेंद के लाइन से हटाकर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। सुदीप साथेरी ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। 3 रन अब तक स्कोर बनता हुआ। जेवर गैलरी डायमंड्स 106 रनों का पीछा कर रही है विश्व स्ट्राइकर्स के खिलाफ। ओ बहुत खराब गेंद, लेकिन बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहिरा देखने को मिलता हुआ। सुदीप साथेरी अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर उस गेंद को रोका उन्होंने, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया, तो कुल मिलाकर 2 रन टीम के खाते में जाएंगे। रन संख्या बनी है 5। पहला ही ओवर चलता हुआ, लेकिन अब तक 3 रन वाइड के बने हैं। जहां तक इस ओवर की बात करें तो आपको बड़े चौकन्ना रहना चाहिए, सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि आपके जमा पूंजी में बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। इस गेंद को खेलना कहीं और चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद पॉइंट के बगल में गई है, वहां पर फील्ड होने के बाद कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ है अनिल गौड़ा पाटिल का। तो 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 106 रनों का जवाब दे रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम ने। 5 रन बनाए हैं, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं गणेश जामड़े, 1 रन बनाकर चेतन पांगेरे, और 3 रन वाइड के बनते हुए पहले ओवर में। तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आ रहे हैं आकाश कटामड़े, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, डटकर मुकाबला किया, एक साहसी पारी खेली उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में, लेकिन कोई ज़्यादा साथ नहीं दे रहा था विश्व स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी। अंततः सिर्फ 105 पर पारी सिमट गई। एक छोटा टोटल ज़रूर है, लेकिन बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है ये छोटा टोटल का मैच, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है कि जब लो स्कोरिंग मैच होता है तो कभी कभी हल्के में लेने की कोशिश प्रतिस्पर्धी टीम करती है, और पता भी नहीं चलता कि कब विकेट खो रही है, बिल्कुल रन नहीं आ रहे हैं, और बाद में जाकर पता चलता है कि अब मुश्किल में आ रही है टीम। तो ऐसा होता है जब छोटा टोटल होता है तब।
चेतन पांगिरे सामना करेंगे आकाश कटामले का। 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। तो इस गेंद को बल्ले का मुंह खोलकर स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत नीचे रही गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर गई। सुदीप सातेरी ने गेंद को गैदर किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं है और गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है आकाश कटामले के पास। स्कोर में कोई बढ़ोतरी नहीं है, अभी भी 5 रन स्कोर है। फिर एक बार छेड़खानी करने की कोशिश, गेंद के लाइन में नहीं आ रहे थे उस गेंद को खेलने के लिए। खड़े खड़े बल्ला शरीर से अलग होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं चेतन पांगिरे। भागे चले रहे कि गेंद और बल्ले का कहीं भी संपर्क नहीं हुआ। सीधी सपाट गेंद गई विकेट कीपर सुदीप के दस्तानों में बिना किसी रन के। तो नफीतुली गेंदबाजी करते हुए कटामले। इस बार ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में 4 रन। इस बार स्लॉट में गेंद डाल रहे थे और स्लॉट में गेंद जैसे ही मिली चेतन पांगिरे ने अपनी बाहें खोली और एक दंदना तो वह चौका चढ़ा दिया उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। तो 2 अच्छी गेंदें डालने के बाद एक थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई भरी गेंद डाली जो कि स्लॉट में गेंद आई और स्लॉट में से उस गेंद को उठाकर खेला एक्स्ट्रा कवर पर 4 रन। 9 पर जा पहुंचा स्कोर अब जेवर गैलरी डायमंड्स का और इस चौके के साथ 5 रन बनाकर अब खेल रहे हैं चेतन पांगिरे। पहला चौका जेवर गैलरी डायमंड्स के तरफ से लगता हुआ। इस बार भी वही स्ट्रोक खेला उसी इलाके में। दूसरी मर्तबा स्लॉट में गेंद को डाल रहे हैं आकाश कटामले और दूसरी मर्तबा इस गेंद को उसी इलाके में भेजा है एक्स्ट्रा कवर पर चौका। 2 चौके आए हैं। 9 पर जा पहुंचे चेतन पांगिरे। पारी की रन संख्या बनी है 13। तेरह पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये 2 चौके कहीं ना कहीं बल्लेबाजों का तो मनोबल ऊंचा करेगा ही, लेकिन गेंदबाजों को थोड़ी सी तकलीफ देगा, खासतौर पर आकाश कटामले को तकलीफ देगा ये 2 चौके। इस बार शॉर्ट गेंद डाली, इस बार सीध में डाली, इस बार हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। बैकफुट पर जाकर मजबूर हुए उस गेंद को खेलने के लिए, विवश किया इस गेंद को। 2 चौके खाने के बाद आकाश कटामले 1 डॉट गेंद करा रहे हैं चेतन पांगिरे को। हल्के से बल्ले पर आने दिया, बल्ले का मुंह तिरछा किया। उस गली के इलाके में खेल रहे थे। विजय पाटिल ने जरूर गेंद को रोका है, लेकिन अच्छी तालमेल और समझबूझ इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में चली और अंतिम गेंद पर 1 रन लेने में कामयाब। तो ये ओवर समाप्त हुआ। 9 रन आए इस ओवर में कुल मिलाकर आकाश कटामले के। तो 2 ओवर में 14 रन जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम बना रही है बिना किसी नुकसान के। 106 रनों का लक्ष्य सामने है और अब तक 14 रन बना रही है। इसका मतलब है कि 92 अब रन उनको बनाने हैं। 18 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 108 गेंदों का खेल बाकी। फिर एक बार अनिल गौड़ा पाटिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आएंगे। पारी का तीसरा ओवर वो जारी करने के लिए तैयार पवेलियन इंचोर से। और चेतन पांगिरे ने आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अनिल गौड़ा पाटिल की नई ओवर की पहली गेंद का। अब ऑन साइड पर एक और खिलाड़ी को रखा जा रहा है। हार्दिक ओझा मिड विकेट के इलाके में जा रहे हैं। फाइन लेग पर खिलाड़ी है, मिड ऑन पर खिलाड़ी हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में खिलाड़ी हैं। थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर इस फील्डिंग के जमावट के साथ। अनिल की यह गेंद, ओ क्या अच्छी बाउंसर डाली, बहुत बढ़िया बाउंसर थी। इस विकेट के ऊपर उछाल प्राप्त करना एक कला है और वैसे भी लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, छरारे बदन के खिलाड़ी हैं अनिल गौड़ा पाटिल। हाँ, आम एक्शन है उनका और इस गेंद को उन्होंने अच्छी तरीके से उछाल दिया जहां पर कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला।
फिर एक बार बाउंसर, लेकिन बहुत बढ़िया अपर कट खेला है, 4 रन। इस मर्तबा ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर डाल रहे थे, लेकिन थोड़ी सी अच्छी बाउंस जो कर रही थी गेंद, उसका फायदा उठाया चेतन पांगेरे ने, अपर कट खेला, 4 रन। थर्ड मैन स्क्वेरर खड़ा है, गेंद बहुत फाइन गई। इस चौके के मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 18 बिना किसी नुकसान के। 2 बाउंसर, 1 कबीट, 1 चौका। ओ अच्छी गेंद थी तकरीबन, ओ खराब फील्डिंग फाइन लेग के इलाके में। यॉर्कर लेन की गेंद को जैसे तैसे खेल रहे थे, बल्ले का अंदरूनी से किनारा लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग की तरफ जा रही थी। फील्डर तो जरूर थे, लेकिन रोक नहीं पाए उस गेंद को। एक और चौका यहाँ पर बनता हुआ। विश्व स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों को बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करनी है अगर इस मैच में उनको वापसी करनी है तो। बहुत बड़ा टोटल तो नहीं बना रहे थे वो बल्लेबाजी के दौरान, लेकिन फील्डिंग और गेंदबाजी के दमखम पर कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश ज़रूर उनको करना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो एक मिस फील्डिंग का चौका बनता हुआ। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 22। उठा दिया मिड विकेट के इलाके में, कोई फील्डर नहीं है और ये गेंद गई है सीधी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से, छक्का बनता हुआ। तो 2 चौके 1 छक्का इस ओवर में आता हुआ। क्या ज़बरदस्त टाइमिंग, और बहुत हवा में गेंद गई ज़रूर, लेकिन दूरी तय करने में कामयाब हुई। वो जो बाउंड्री है 65 मीटर की, वो 65 मीटर की बाउंड्री पार कर गई गेंद। चौबीस पर खेल रहे हैं चेतन पांगिरे। अब रडार पर लिया है उन्होंने अनिल को। ये मिसक्यू भरा स्ट्रोक है, 2-2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन अंततः रवि उखली ने कैच को लिया है। हार्दिक ओझा आ रहे थे, रवि उखली भी आ रहे थे, लेकिन मेरा कैच है, कॉल अच्छा दिया, रुक गए फिर हार्दिक ओझा और अच्छा कैच लिया। एज लेकर गेंद हवा में गई। एक और बड़ा स्ट्रोक चेतन पांगेरे के बल्ले से निकल तो रहा था ज़रूर, लेकिन मिस टाइमिंग बना और उनका कैच लेने के बाद 24 रनों की धुआंधारी पारी जो चल रही थी वो समाप्त हुई। जितनी जल्दी उनका बल्ला गर्म हुआ उतनी ही जल्दी ठंडा भी करने में कामयाब हुए अनिल गौड़ा पाटिल। कुल रन संख्या अब है 28 रन 28, 1 विकेट अभी अभी खो रहा है चेतन पांगेरे का जेवर गैलरी डायमंड्स। गणेश दमले का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज नागेंद्र पाटिल। तो छक्का लगने के बाद अपने आप पर काबू तो नहीं रख पाए चेतन पांगेरे। उनके रगों में खून तेजी के साथ दौड़ने लगा, हाथ पैर फूले उनके। एक और छक्का लगाने की कोशिश वो कर रहे थे और मिसक्यू भरा वो स्ट्रोक मिड ऑफ के इलाके में उनका कैच लिया गया। 24 रन वो बना रहे थे, 28 में से 24 रन अकेले चेतन पांगेरे के रहे हैं। गणेश दमले एक ही रन बना रहे हैं और 3 वाइड रन बनते हुए। इस गेंद को क्या जबरदस्त स्क्वायर कट किया है, 4 रन मिलेंगे।
गणेश जामले क्या आला दर्जे का स्ट्रोक खेल रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आई और बल्ले का मुंह तिरछा किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गए। पॉइंट और कवच के बीच में से दरार पैदा की उन्होंने, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। इस दंग रह गए सब खिलाड़ी, उस गेंद को देखते रहे और पलक झपकते ही गेंद उस पॉइंट बाउंड्री की तरफ गई 4 रन के लिए। इस चौके की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 32, 1 विकेट के नुकसान पर। गणेश जामले अब जा पहुंचे 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर। बहुत महंगे ओवर समाप्त हुआ ये अनिल गौड़ा पाटिल का। 18 रन आए इस ओवर में कुल मिलाकर। वैसे भी 14 रन तो बना ही रहे थे चेतन पांगेरे, और उस आखिरी गेंद पर चौका लगाकर कहीं न कहीं रनों की जो बहती गंगा थी उसमें गणेश जामले ने हाथ धो के लिया। उस आखिरी गेंद पर उन्होंने भी एक चौका चढ़ा दिया क्या, लेकिन आला दर्जे का टाइमिंग था, टॉप क्लास टाइमिंग, और चौका उस आखिरी गेंद पर बनता हुआ है। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 3, और 3 ओवर के बाद 32। जेवर गैल्वे डायमंड्स 1 विकेट के नुकसान पर 106 का पीछा कर रही है और बड़ी दमदार शुरुआत हुई है। भले ही 1 विकेट खोया हो, लेकिन रनों की रफ्तार 10 से ऊपर चल रही है इस वक्त जेवर गैल्वे डायमंड्स के लिए। तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ हार्दिक ओझा आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। सामना करेंगे नागेंद्र पाटिल। ओह, खड़े खड़े बल्ला चला रहे हैं, लेकिन बीट कराती हुई गेंद सुदीप सातिरी के दस्तानों में जा रही है बिना किसी रन के। ओहो, ये एक और अच्छी गेंद हार्दिक ओझा की, इस बार नीचे रही और नीचे रहकर गेंद गई विकेट कीपर की तरफ। हार्दिक ओझा बड़े कंजूस किस्म के गेंदबाज है, ज़्यादा रन खर्च नहीं करते, वो बड़ी सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी करते हैं, रनों को रोकना वो अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन खराब गेंद डाल रहे हैं, फुल टॉस इस गेंद को फील्ड किया है एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, मिड ऑफ पर से फील्डर ने आकर, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया। नागेंद्र पाटिल ने अपना खाता खोला और पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 33। 1 विकेट खोने के बाद पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है। गणेश जामले 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस गेंद को बल्ले का अंदरूनी किनारे लेकर स्क्वायर लेग के इलाके में आई है। शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनेगा गणेश जामले के लिए। स्कोर है अब 34। 1 विकेट खोने के बाद गणेश जामले अब जा पहुंचे 6 पर। इस गेंद को बैकफुट जाकर इस गेंद को स्क्वायर कट किया, लेकिन पॉइंट की दिशा में गेंद, कोई रन नहीं बना, पॉइंट पर फील्डर मौजूद। तेज गेंद डाल रहे थे इस बार, लेकिन लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद। अच्छी परिवर्तन गति में ला रहे हैं, थोड़ी तेज गेंद करवाई, नीचे भी रही, पैड पर लगी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, इसलिए अंपायर ने खारिज किया उस अपील को। लेकिन 2 ही रन का ये ओवर आता हुआ देखिए, हार्दिक ओझा ने क्या बढ़िया गेंदबाजी की। पिछला ओवर 18 रनों का चला जाने के बाद एक छोर से 2 ही रन देकर बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हार्दिक ओझा। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 4, और 4 ओवर के बाद 34 रन बन रहे हैं 1 विकेट के नुकसान पर जेवर गैल्वे डायमंड्स के लिए। वर्तमान श्रृंखला में दोनों टीम्स प्रबल दावेदार माने जाते हैं, लेकिन जब तक आप जीत नहीं सकते ये मैच, तब तक मुश्किल है। वर्तमान श्रृंखला में सफ़र आगे बढ़ने के लिए दोनों टीम्स को जीत अनिवार्य है। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं मदन बेड़गांवकर, जो कि अपने कोटे का पहला, पारी का 5वां ओवर वो जारी करेंगे और सामना करेंगे गणेश जामले। 6 रन बनाकर खेल रहे हैं एक चौके की मदद से। 34 पर 1 विकेट खो रही है। 4 ओवर का खेल समाप्त हो रहा है।
इस बार हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद 4 रन बनेंगे। गणेश जामले के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदना तो चौका। अच्छी फ्लाइट दे तो रहे थे जरूर मदन बेलगांवकर, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकाल दिया। ज़्यादा फासला नहीं है। हार्दिक ओझा जो खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर पर, कवर्स पर जो विजय पाटिल खड़े हैं उनके बीच में ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन फिर भी सुई में धागा बिरोकर उस गेंद को ड्राइव किया था गणेश जामले ने। यह दंदना तो बच्चों का स्कोर को आगे बढ़ा रहा है 38 पर, और पहली गेंद पर चौका खा रहे हैं मदन बेलगांवकर। अच्छा स्वागत किया है गणेश जामले ने मदन बेलगांवकर का। अब थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए एक्स्ट्रा कवर स्वीपर कवर पर एक खिलाड़ी रखा गया है। थर्ड मैन है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी हैं। ये चूके उस गेंद को और ना ही सुदीप सातेरी गेंद को रोक रहे हैं ठीक तरीके से। 22 का 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 39। इस बार इस गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला जरूर है, लेकिन सीधे पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं बनेगा। वो स्लॉग स्वीप करने का प्रयास चल रहा था नागेंद्र पाटिल का, लेकिन बीट हुए, कोई रन नहीं। कहीं बल्लेबाजों का ये पसंदीदा स्ट्रोक है स्लॉग स्वीप खेलना, लेकिन वैसे गेंद आनी भी चाहिए स्लॉग स्वीप खेलने के लिए, वैसे तो नहीं आई। इस बार स्टीयर किया इस गेंद को, लेकिन थर्ड मैन पर गेंद 1 रन के लिए चल पड़े और 1 ही रन बनता हुआ नागेंद्र के लिए। रन संख्या अभी 1 रन की मदद से आगे बढ़ रही है 40। 1 विकेट खोने के बाद पारी का 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ मदन बेलगांवकर का। गणेश जामले 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार भी करारा ड्राइव, खराब फील्डिंग, बहुत खराब फील्डिंग। हार्दिक ओझा को आना पड़ा उस गेंद को रोकने के लिए। और देखिए यहां पर गणेश जामले दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन नागेंद्र पाटिल तैयार नहीं थे। आधे पिच से वापस लौटे गणेश जामले। 1 रन बनने के बाद 5वें ओवर का खेल समाप्त हुआ। 41 रन बने हैं 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। 1 विकेट के नुकसान पर गणेश जामले 11 रन बनाकर खेल रहे हैं 2 चौकों की मदद से, और नागेंद्र पाटिल ने 8 गेंदों का सामना किया है। अब तक 2 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। चेतन पंगिरे आउट हुए। उन्होंने धुआंधारी बल्लेबाजी की। 13 गेंदों में 24 रन, 4 चौके, 1 छक्का चढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन उनकी पारी समाप्त करने में कामयाब हुए थे अनिल गौड़ा पाटिल। इससे पहले कि अब नए ओवर की शुरुआत हो, आगे का विवरण देने के लिए आएंगे हमारे साथी अंग्रेजी के कमेंटेटर चेतन बेलूर। Thank you, Pramod. At least one thing we are sure that this match will have a result anyway, since 5 overs have been over now. So 5.1 and the scorecard reading 42. And Nagendra Patil batting on 2 runs, and Ganesh Jamble is batting on 12 runs. It's Hardik Oza to the batsman Nagendra Patil to face Hardik Oza.
Again, driving it to the cover field. Maddie coming in and fielding for a dot ball. Current 7.88. Again, played it down with soft hands towards the wideish third man there. Vineet Adurkar coming in. Meanwhile, the batsman crossover for a single. Good running by these two batsmen. With that single taken, the scorecard for the limps along to 42 for the loss of 1 wicket. Driven it there straight to the cover fielder for a dot ball. Ganesh Jamle once again to face Hardik Oza. Play with soft hands of his pads towards the square leg. The fielder coming in and fielding. One more for the taking. With that single taken, the scorecard for the limps along to 43. 44 now. With that single, it goes to 44 for the loss of 1 wicket. And a cut shot there by Nagesh. Wideish of slip region. Third man up in the circle. And third man will just run behind the ball to see the ball passed over the boundary line. Vineet Adurkar there with that boundary. Scorecard ticks along to 48 for the loss of 1 wicket. And it also completes 6 overs. 6 overs have been bowled and the scorecard reading 48 for the loss of 1 wicket. A good ball there by Maddie Madan Belgaonkar there. Outside the off stick, beating the batsman completely into the hands of the keeper for a dot ball. Oh, it's been clean ball there. Trying to play that in the front foot. Maddie doing the job there. And the second wicket going down, begging in the form of Ganesh Jamle.
Maddie there now to the batsman Amay Bhatkande onto the back foot and cries of catch it. The third wicket goes down, trying to pull him over. Fine leg for a boundary there. The short pitch delivery. Amay Bhatkande doing it completely, giving it away so easily. So wickets in quick succession now. Third wicket goes down in the form of Amay Bhatkande. Goes back without tickling the scorers. For a big duck for himself, there is a third wicket at the loss of 48. Do we have a match on here? Can Vishu strikers restrict Xavier Gallery from going to that total of 106 that has been set for them? 48 for 3 now. Everything happening there. You just can't leave the match like that. It was looking as though it is going to be a one-sided match, but Vishu strikers have suddenly come back, picked up those 2 wickets, and now it is 48 for 3. A lofted, trying to hit a lofted drive there. Arjun Patel trying to drive it out of the by signal by umpire. One more in the form of an extra. With that extra, the scorecard further ticks along to 49 there. Wickets are falling in quick succession. And with that dot ball, it also completes the overs after the completion of 7 overs, a scorecard reading 49. They are going at a run rate of 7 runs per over. Well, it's Furkan Mulla, the bowler, coming into the act now to the batsman Arjun Patil. Oh, inside edge there, the ball rolling towards the short fine leg region. Sunil Sakri coming in and fielding there. Pini Tadurkar there, sorry. Driving it there off the wideish ball towards cover. Hardik Oza, sorry, it's Milin, I think. Madan Bragaonkar. Fields
for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 50 runs. Flighted delivery there, watchfully played by the batsman Nagendra Patil for a dot ball. The ball rolling out of the pitch area. Again the ball going to the cover region. Madan coming in and fielding. Meanwhile the batsman crosses over for a single. With that single, the scorecard ticks along to 51. Again there, a dot ball outside the off stump. Driven all along the carpet towards the sweep cover region. Slightly fumbled there by the fielder. The batsman crossover for one more single. With that single, the scorecard further ticks along to 52. With that, it also completes the overs. After the completion of 8 overs, the scorecard reading 52 for the loss of big appeal there, and up goes the finger. The 4th wicket goes down in the form of Arjun Patil there, trying to play it. The ball hitting the pads and also keeping low. Just LBW caught in front of the crease, in the front of the wicket on the crease there. So to tell you that the 4th wicket goes down begging in the form of Arjun Patil, who got just 2 runs of the 5 deliveries that he faced. So 4 down for 52 now. Do we have a match on? Can they mate? Well, Anand Kumar comes onto the act now. Anand Kumar at the fall of 4th wicket in the form of Arjun Patil. Again now Xavier Gallery in deep trouble with 52 for 4. Another wicket or 2 here, and let me tell you, we have a match on. It's going to be very difficult for Xavier Gallery. It is not easy out there. Suddenly Vishnu strikers are looking exceptionally well. Madan has picked up 3 wickets in 2.1 overs, that is balled 1 maiden and 6 runs is given. An economy of 2.77. Wonderful piece of bowling there by Madan Belgaonkar. 2.1, 1 maiden, 6 runs, 3 wickets. Watchfully played by Anand Kumar. A defensive shot rolling out of the pitch area. Straight to the bowler himself for a dot ball. Again played with soft hands to the cover region. The fielder coming in quickly and fielding there. Another dot ball for the taking. Every dot ball will be encouraged and cheered by the fielding side. Again straight to the fielder, cover fielder there for another dot ball.
Played with soft hands, wanting a single there, directed maybe, but a fumble there. Hosa comes it from behind and fields it. Meanwhile, 1 run for the taking. With that single, the scorecard for the limps along to 53 for the loss of 4 wickets. That gets Nagendra Patil on strike, who has a job on hand to do. Flighted delivery there, slower one at the back of the hand there. Maddie Madan Belgaonkar, full pitch delivery. Nagendra trying to drive him straight to the bowler himself in his follow through for a dot ball. With that dot ball, it also completes the over. So after the completion of 9 overs, the scorecard reading 53 for the loss of 4 wickets. To tell you that 53 runs for the loss of 4 wickets, and the 2 batsmen out there in the middle are Nagendra Patil batting on 8 runs of the 16 deliveries, and Anand Kumar who's batting on 1 run of the 4 deliveries. Straight to the bowler himself in his follow through there, Furkan Mulla for a dot ball. Played it up pitchly there, cries of catch it, but on the bounce to the fielder there, and the ball wins over the boundary line. Rare boundary and a much needed boundary coming at the bat of Anand Kumar to the batsman Anand Kumar and to Xavier Gallery Diamonds. So 57 now with that boundary for 4. Again, clean bowled him there, trying to hit a big one. Anand Kumar is clean bowled. We have a match on. 5th wicket goes down for the Xavier Gallery in the form of Anand Kumar. To tell you that he's got just 5 runs of the 7 deliveries that he has faced, and the 5th wicket goes down. Let me tell you, we have a match on here, and the Vishnu Strikers have managed to pick up 5 wickets for 57 runs. They're not letting on easy. The first 2 overs were different. Suddenly they picked up 1 or 2 wickets and they're back in the act. And is Majid Makandar, the captain, walking onto the crease at the fall of Anand Kumar, who got 5 runs of the 7 deliveries. And Majid Makandar will be taking strike. Drinks is called onto the ground at 9.3 overs and wicket been falling. Well, to tell you that when the innings began this afternoon, after the completion of 1 over, the scorecard reading 5 runs. At the end of 2 overs, it was 14, 3 overs 32, 4 overs 34, 5 overs 41, 6 overs it was 48, 7 overs of 49, 8 overs 52, 9 overs 53. Well, current run rate is exactly 6 runs per over now. 9.3 overs have been bowled and the scorecard reading 57 for 5. And all those 5 wickets to go down. That of Chetan Pangire got 24 runs of 13 deliveries. Ganesh Jamble got 13 runs of the 13 deliveries.
Amay Bhatkande got a big duck for himself. Then it was Arjun Patil. He got 2 runs of the 5 deliveries. And last man to go back to the dugout was Anand Kumbar, who got 5 runs of the 7 deliveries. Well, the 2 men out there in the middle are Majid Makandar, the captain himself, and Nagendra Patil. Majid Makandar yet to open the account for himself and take the scorecard ticking along further ahead. And Nagendra Patil is batting on 8 runs of the 16 deliveries. They are chasing a modest total of 106 runs to win this match. And they are 57 for 5. Half of the side is back in the dugout with 57 on the board. We have a match on. Vishnu Strikers not leaving it easy and not giving it easy at all. They want to win this match. Let me tell you, if Vishnu Strikers win this match, they are very much alive to play the qualifiers. Meanwhile, Majid Makandar checking his guard and taking his guard with the umpire. Played with soft hands there, watchfully played with soft hands towards shut square leg for a dot ball. Wicketkeeper running around and going to the ball and fielding it for a dot ball importantly. Every dot ball will be cheered. Oh, wide signal there down the leg side. Well, they're just forgetting the start that was given by Chetan Pangiri this afternoon. He made a magnificent 24 of 13, and ever since no batsman of the Xavier gallery are keeping up to the mark. They're not keeping their nerves cool and calm. Again going onto the back foot and trying to play a big one, going to the square leg, mid-wicket fielder coming in towards square leg and fielding. The batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard for the Limbs along to 59 for the loss of 5 wickets. Well, that's it. With that single, Majid Makandar opens his account and takes the scorecard ticking along to 59. Cut it down, a good cut shot there towards a sweeper cover, deep point you can say. Slightly fumbled by the fielder, but the batsman will cross over for another easy single. With that single taken, it also completes the over. So after the completion of 10 overs, scorecard reading 60 runs for the loss of 5 wickets. They are going at a run rate of 6 runs per over. As there is change in bowling, there is change in commentary. I asked my co-commentator Pramod Jappe to take on in Hindi. धन्यवाद चेतन बेलूर। तो रोचक मोड पर यह मैच है। मदन बेलगांवकर बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी साबित हुए हैं। यह खराब फील्डिंग उस स्लिप के कॉरिडोर में कर रहे हैं फील्डर। जहां पर कोई रन नहीं बनना चाहिए था वहां पर 1 रन बनता हुआ नागेंद्र पाटिल के लिए। इस 1 रन की मदद से रन संख्या बनी है 61, 5 विकेट के नुकसान पर 41 पर 1। उसके बाद अचानक विकेट गिरने का सिलसिला जारी हुआ और 16 रनों में 4 विकेट खो रही थी जेवर गैलरी की टीम। अब माजिद मकानदार और नागेंद्र पाटिल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 55 रनों की दरकार। 45 रनों की ज़रूरत है और 45 रन बनाने के लिए अभी भी 57 गेंदों का खेल होना बाकी। 1 डॉट गेंद करा रहे हैं मदन बेलगांवकर माजिद मकानदार को। गेंद अपील जरूर नहीं, बोल्ड हुए। जी हाँ, बिल्कुल पैड पर लगकर गेंद स्टंप्स पर गई है। बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बोल्ड हुए हैं माजिद मकानदार। बहुत बड़ा झटका मिलता हुआ और ये 6ठा विकेट का नुकसान हो रहा है और मदन बेलगांवकर का ये 4था विकेट। तो जैसे मदन बेलगांवकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने हर एक ओवर में विकेट लिया है
और 4 कीमती विकेट उन्होंने लेकर 8 रन दिए हैं उन्होंने, और जेवर गैलरी डायमंड्स को उन्होंने सख्ते में लाकर खड़ा किया है। तो अब 61 रन 6 विकेट के नुकसान पर माजिद मकानदार एक ही रन बना रहे थे। छप्पन गेंदों में 45 के दरकार। मैंने पहले भी कहा था कि लो टोटल का मैच अगर हो तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है। कहने सुनने में आसान ज़रूर हैं, लेकिन मैदान के अंदर बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। और देखिए जेवर गैलरी डायमंड्स के 6 तगड़े बल्लेबाज वापस लौटे हैं पवेलियन में। ओ ये गेंद सुरा बनी और गेंद बीट कराती हुई गई सुदीप साथी के दस्तानों में। कोई रन नहीं बना। गेंद वापस मदन बेलगांवकर के पास। आकाश पत्तार के लिए गेंद फ्लाइटेड दे रहे थे। फ्लाइटेड गेंद को खेला, उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद फील्ड हुई और 4 ओवर का कोटा पूरा किया है मदन बेलगांवकर ने। शानदार बॉलिंग, कोई मेडन नहीं, 1 मेडन माफ कीजिए, 4 ओवर 1 मेडन, 8 रन 4 विकेट। इससे बढ़िया बॉलिंग विश्लेषण T20 के फॉर्मेट में हो ही नहीं सकता। और ऐसे समय पर वो विकेट ले रहे हैं जहां पर विश्व स्ट्राइकर्स के जमा पूंजी में ज़्यादा रन नहीं है। अब नागेंद्र पाटिल और आकाश पत्तार को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों के ऊपर, क्योंकि अब देखिए अब सूरत हाल ये है इस मैच का, 54 गेंदों में 45 रनों की दरकार। फुरकान मुल्ला गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए। इस गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद, लॉन्ग ऑफ से फील्डर भागेंगे लेकिन मौका नहीं मिलेगा। ये दंदनाता हुआ चौका नागेंद्र पाटिल के बल्ले से निकल रहा है और ये दिलासादायक 4 रन है। बहुत देर से रनों की किल्लत जो महसूस कर रही थी जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम, ये चौका उनको दिलासा देगा। रनों की किल्लत जो महसूस कर रही थी वो कम होता हुआ, और कहीं ना कहीं जाकर पहली गेंद पर चौका खा रहे हैं फुरकान मुल्ला। 14 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में जरूर है। इस चौके की मदद से नागेंद्र पाटिल जा पहुंचे 14 पर। 20 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया। ये दूसरा चौका। हार्दिक ओझा मदद कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर इनके बैट्समैन आकाश पत्तार को। ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर थी, नीचे भी रही। बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे उस गेंद को फाइन लेग के इलाके में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पैड पर लगी, अपील हुई, लेकिन सादिक किद्दूर ने नाबाद करार दिया क्योंकि गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। लेकिन थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर पैदा हुई नागेंद्र पाटिल के लिए। वो छकाने में कामयाब। फिर एक बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 2 डॉट गेंदे करा रहे हैं 1 चौका खाने के बाद फुरकान मुल्ला। 65 पर 6। इस बार स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, घुटनों के बल जाकर नागेंद्र पाटिल मिड विकेट के इलाके में एक ऊंचा स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं, लेकिन गेंद ने बुरी तरीके से छकाया उनको। कोई रन नहीं बना। ओ ये गेंद फाइन लेग पर गई है। खिलाड़ी जरूर पीछा करेंगे लेकिन गेंद की जीत होगी। दोनों खिलाड़ियों की ऊर्जा जाया हो गई है और ये चौका बनता हुआ। बल्ले का किनारा लिया था गेंद ने, जानबूझकर उस गेंद को खेला था। बड़ा फाइन खेला नागेंद्र पाटिल ने और ये चौका उनके खाते में जाने के बाद अब उनका व्यक्तिगत स्कोर है 18 और 69 रन स्कोर बन रहा है। अब 37 की ज़रूरत है, 37 रनों की ज़रूरत। 49 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन चिंता का कारण ये है कि 6 विकेट खो रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम। यही एक स्थापित जोड़ी है मैदान पर जिनके बल्ले में वो क्षमता है रन बनाने की। फुरकान की ये गेंद, ओ उठा दिया हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ के इलाके में, लेकिन नहीं, बाहर जाकर गेंद सीधी उस बैनर पर लगी है
और ये छक्का बनता हुआ नागेंद्र पाटिल अब धीरे धीरे लय में आ रहे हैं। काफ़ी देर से वो खामोश खड़े थे, कोई ज़्यादा रन नहीं बना रहे थे, समय बिताया उन्होंने अच्छा खासा मैदान के ऊपर और इस ओवर में उन्होंने अच्छा खासा हमला बोला फुरकान मुल्ला पर। 14 रन खर्च किए हैं फुरकान मुल्ला ने इस ओवर में। तो कुल मिलाकर अब इस छक्के की मदद से 24 पर जा पहुँचे नागेंद्र पाटिल और 75 रन स्कोर बन रहा है। 6 विकेट के नुकसान पर जेवर गैलरी डायमंड्स का 31 रनों की ज़रूरत है और 31 रन बनाने के लिए अभी भी 8 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 48 गेंदों का खेल बाकी, 31 की ज़रूरत है। 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अब हार्दिक ओझा आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए और सामना करेंगे आकाश पत्तार, जिन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। ओ ये गेंद लेग स्टंप के बाहर डाल रहे हैं हार्दिक ओझा, वाइड का इशारा होता हुआ 76 रन स्कोर बन रहा है और 6 विकेट खो रही है जेवर गैलरी डायमंड्स। 30 रनों की जरूरत है। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, पॉइंट पर खेला लेकिन रन नहीं मिलेगा। चौकन्ने है फील्डर उस इलाके में विनीत अडूरकर के रूप में। उन्होंने गेंद को रोकने के बाद रन लेने की कोई कोशिश नहीं हुई दोनों बल्लेबाजों की तरफ से और गेंद अब वापस लौट रही है हार्दिक ओझा के पास। अब 47 गेंदों का खेल बाकी, 47 गेंदों में 30 रनों की और जरूरत है जेवर गैलरी डायमंड्स को। तेज गेंद डाली लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं बना रहे हैं आकाश पत्तार, लेकिन उस वाइडिश मिड ऑन के ऊपर गेंद फील्ड हुई। 1 रन का इजाफा होता हुआ आकाश पत्तार ने अपना खाता खोला और पारी की रन संख्या अब है 77, 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार ये गेंद वाइड का इशारा होता हुआ लेग स्टंप के बाहर डाल रहे हैं। ऐसे समय पर स्पिनर्स वाइड डाल रहे हैं जहां पर उनको रन रोकना जरूरी है और एक वाइड और डाल रहे हैं इस ओवर में। वो ड्राइव करना चाहा, खड़े खड़े बल्ला चला रहे हैं मानो पैरों में बेड़ियां लगी हों, उस तरीके से एक ही जगह पर ठहर कर उस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं नागेंद्र पाटिल, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंद डाल रहे हैं इस बार, थोड़ी सी तेज गेंद डाली, सटीक डाली, स्टंप्स के ऊपर डाल रहे थे। रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के लिए मजबूर किया, विवश किया नागेंद्र पाटिल को, कोई रन नहीं बना। इस गेंद को बल्ले पर आने दिया, पॉइंट पर खेला, नाक के नीचे से रन चुरा कर पूरा करने में कामयाब हुए हैं। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन। झपट्टा मारा तो फील्डर ने जरूर, विजय पाटिल थे उस पॉइंट के इलाके में, जोरदार झपट्टा मारा, चीती की चपलता दिखाई उन्होंने जरूर, लेकिन पहले ही दौड़ पड़े थे आकाश पत्तार। हामी भरी नागेंद्र पाटिल ने। ओ ये आसान कैच, फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई पॉइंट पर और विजय पाटिल के हाथों में ये आसान सा कैच, एक लड्डू कैच। बल्ला जल्दी बंद हो रहा था आकाश पत्तार का, उस गेंद को वो फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे ऑन साइड पर, बल्ले का मुंह थोड़ा सा जल्दी बंद होने की वजह से बाहरी किनारा लिया और पॉइंट पर कैच लिया उनका। 1 ही रन बनाकर वापस लौटे पवलन में। अब 7वां विकेट खो रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम। अब नए बल्लेबाज आएंगे रोहित पाटिल नागेंद्र पाटिल का साथ देने के लिए।
तो क्या पाटिल ब्रदर्स मिलकर कुछ कारनामा करके दिखा सकते हैं जेवर गैलरी डायमंड्स के लिए, क्योंकि विकेट जल्दी जल्दी खो रही है, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद विकेट खोती जा रही है, तो कहीं ना कहीं दबाव तो ज़रूर रहेगा। लेकिन विश्व स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उनके जमा पूंजे में बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, सिर्फ 105 रन बना रही थी वो 19.5 ओवर में, लेकिन जितने भी उनके खाते में रन हैं उसको लेकर वो एक अच्छा जुझारूपन दिखा रहे हैं, लड़ाकूपन दिखा रहे हैं। अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी उनके सोच में ये बात है कि ये मैच जो उनके लिए फंसा हुआ था वो निकाल सकते हैं, इस डूबती हुई नैया को वो किनारे पर ला सकते हैं। ऐसा विश्वास धीरे धीरे उनको आ रहा है, क्योंकि विकेट चटका रहे हैं थोड़े थोड़े अंतराल के बाद। रोहित पाटिल हैं अभी भी मैदान पर, नागेंद्र पाटिल हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता बड़ी अच्छी है। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं विजय कुमार पाटिल। अब देखिए 42 गेंदों का खेल बाकी है और 27 की ज़रूरत है 42 गेंदों में। नागेंद्र पाटिल बैकफुट पर गए, जगह बनाई, कट किया, लेकिन नहीं रन मिलेगा। पॉइंट पर सीधे फील्डर के पास आकाश कटामड़े खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। तो रनों के लिए झगड़ना पड़ रहा है इस वक्त, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं जेवर गैलरी डायमंड्स को 106 रनों का लक्ष्य पार करने के लिए। बैकफुट पर गए, फिर एक बार पॉइंट के ऊपर खेला, रन लेने के लिए निकल पड़े, थ्रो हुआ लेकिन एक ही रन बना। और थ्रो के चलते बैकअप किया। आकाश कटामले ने नॉन स्ट्राइकर इनके ऊपर थ्रो कर रहे थे, सटीक निशाना लगता तो खतरे में चल रहे थे नागेंद्र पाटिल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, एक ही रन बना। रन संख्या बनी है अब 80, 26 की जरूरत 40 गेंदों में। इस बार ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं बना रहे हैं रोहित पाटिल, लेकिन फिर भी ये कीमती रन है। अब तकनीक के तौर पर ये स्ट्रोक कितना अच्छा था कितना बुरा था इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक रन जो बना वो बड़ा ही कीमती रन है। 81 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 81 for 7। फ्लिपर गेंद नीचे रही, लेकिन सफाई के साथ इस गेंद को खेलने में नागेंद्र पाटिल कामयाब हुए हैं। हार्दिक ओझा डीप मिड विकेट पर खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका। एक रन के साथ अब 26 पर जा पहुंचे नागेंद्र पाटिल, 27 पर नागेंद्र पाटिल, रन संख्या 82, 7 विकेट के नुकसान पर। हल्के से इस गेंद को धकेला है, रन तो नहीं मिलेगा। सीली मिडॉन की तरफ गेंद जा रही थी, खुद विजय पाटिल ने जाकर गेंद को उठाया और ताना बना बूंदते हुए वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर कप्तान विजय पाटिल। खराब गेंद डाल रही, खराब गेंद, लेकिन फाइन लेग के ऊपर फील्डर तैनात, थोड़ी छोटी गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे थे। इस गेंद को लपेट कर खेला जरूर है, फाइन लेग के इलाके में गेंद फील्ड हुई, लेकिन एक रन का इजाफा होने के बाद ये ओवर अब समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर अब 14वें ओवर का खेल समाप्त हुआ। 14 ओवर के बाद 83 रन बना रही हैं 7 विकेट के नुकसान पर। अब 36 गेंदों का खेल बाकी है और 36 गेंदों में 23 रनों की दरकार। 27 रन बनाकर नागेंद्र पाटिल खेल रहे हैं और रोहित पाटिल खेल रहे हैं 2 रन बनाकर। चेतन पांगिरे ने दमदार शुरुआत करके दी थी गणेश जामड़े के साथ। नागेंद्र पाटिल अभी भी डटे हैं मैदान पर, लेकिन आज निराश किसी ने किया हो तो वो है अमय भातकांडे, अर्जुन पाटिल, आनंद कुंभार, माजिद मकानदार, आकाश पत्तार। ये 5 दिग्गज बल्लेबाजों ने आज निराश किया है जेवर गैलरी की टीम को। लेकिन अभी नागेंद्र पाटिल मैदान पर मौजूद है, रोहित पाटिल मौजूद है मैदान पर, तो थोड़ी सुकून की सांस, राहत की सांस तो ज़रूर ले रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम, क्योंकि 36 गेंदों में सिर्फ 23 रन उनको बनाने हैं, तो 3 विकेट दूर है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। हार्दिक ओझा पेविलियन इंचों से गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए हवा में खेला, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट गिरी गेंद, रन लेने के लिए थोड़ी सी उतावले नजर आए नॉन स्ट्राइकर इनके ऊपर खड़े हुए नागेंद्र पाटिल, लेकिन मदन बेळगांवकर ने गेंद को उठाकर थ्रो किया था, रन नहीं मिला। एक डॉट गेंद हो रही है।
बैकफुट पर गए, जगह बनाकर ड्राइव करना चाहा कहीं और, लेकिन गेंद गई है मिड ऑन के इलाके में। रवि उकली ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं बना। 2 डॉट गेंदें हो रही है हार्दिक ओझा की तरफ से। बैकफुट पर गए, पंच किया लेकिन रन नहीं मिलेगा। कोई दमखम नहीं था स्ट्रोक में, बेजान सा स्ट्रोक बना रोहित पाटिल के बल्ले से। तो लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला जारी इस ओवर में। वो नीचे रही, लेकिन बैकफुट पर जाकर बल्ला नीचे लाकर झट से उस गेंद को उन्होंने मिड विकेट के इलाके में खेलकर 1 रन पूरा किया। 84 7 विकेट के नुकसान पर। छकाने में कामयाब हुए हैं नागेंद्र पाटिल को हार्दिक ओझा। बड़े कंजूस किस्म के गेंदबाज हैं। 1 ही रन अब तक इन 5 गेंदों पर दे रहे हैं हार्दिक ओझा। डॉट गेंद के साथ ये ओवर अब समाप्त हो रहा है। 1 ही रन इस ओवर में आ रहा है। 4 ओवर में 14 रन दिए हैं हार्दिक ओझा ने, 1 विकेट उनको मिलता हुआ। तो अब ओवर समाप्त हुए हैं 15 और 15 ओवर के बाद रन बने हैं 84। अब 22 रनों की जरूरत है और 30 गेंदों का खेल होना बाकी। आकाश कटामले अब आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। रोहित पाटिल और नागेंद्र पाटिल इस वक्त मैदान पर हैं। रन संख्या बनी है 84, 7 विकेट के नुकसान पर। 27 पर नागेंद्र पाटिल खेल रहे हैं और 3 रन बनाकर रोहित पाटिल। कटामले की गेंद, अच्छा ड्राइव खेला है एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। सरपट गेंद बाउंड्री की तरफ भाग रही है, लेकिन लॉन्ग ऑफ से फील्डर ने आकर गेंद को रोका, लेकिन तब तक 2 रनों का इजाफा होता हुआ रोहित पाटिल के खाते में। अब 5 पर जा पहुंचे रोहित पाटिल और पारी की रन संख्या आगे बढ़ रही है 86 रन, 86। सिर्फ 20 रनों की जरूरत है, 29 गेंदों का खेल होना बाकी। शॉर्ट गेंद डाल रहे हैं, पंजों के ऊपर खड़े रहकर उस गेंद को स्टीयर किया। थर्ड मैन के इलाके में रवि उकली गेंद को फील्ड कर रहे हैं। थर्ड मैन के इलाके में 1 रन बनता हुआ रोहित पाटिल के लिए। रोहित पाटिल जा पहुंचे 6 के व्यक्तिगत स्कोर पर और रन संख्या बनी है अब 87 रन, 87, 7 विकेट के नुकसान पर। ये जोड़ी धीरे धीरे रन बना रही है। वो जानते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है और अभी भी ये मैच का नतीजा हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब मोड पर यह मैच है। यह मैच किसी का भी हो सकता है, जेवर गैलरी का भी हो सकता है या फिर विशुद्ध का भी यह मैच हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ मौके जरूर हैं।
आगे बढ़े, हल्के से धकेला, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद फील्ड हुई। मदन बेड़गांव का जब तक की गेंद को उठाते नागेंद्र पाटिल ने एक रन चुराकर पूरा किया। रन संख्या बनी है अब 88, 28 पर नागेंद्र पाटिल, 6 रन बनाकर रोहित पाटिल। अब 18 रनों की जरूरत है, 27 गेंदों का खेल होना बाकी। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद डाल रहे थे, लेकिन रोहित पाटिल कुछ बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने जरूर ड्राइव किया था खोद कर उस गेंद को, लेकिन सीधी बॉलर की दिशा में गेंद आ रही है। आकाश कटामड़े खुद गेंद को रोक रहे हैं अपने ही फॉलो थ्रू में और वापस चले बिना किसी रन के। आकाश कटामड़े इस बार भी मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, लेकिन हार्दिक ओसा के पास गेंद गई है। एक और डॉट गेंद कराने में कामयाब हुए हैं आकाश कटामड़े। तो देखिए लो टोटल का मैच है, 106 ही रन बना रहे हैं, लेकिन कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए। इस बार फिर एक बार मिड विकेट के इलाके में गेंद को खेला, रन नहीं मिलेगा। हार्दिक ओझा के पास गेंद गई है। एक और अच्छा ओवर समाप्त हो रहा है आकाश कटामड़े का। इस ओवर में अगर हम देखेंगे 4 ही रन आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर 16वें ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। 88 रन बना रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम, 7 विकेट खो रही है। अब गेंदे बचे हैं 24, रन चाहिए 18। कल 2 लीग मैचेस खेले जाएंगे KR शेट्टी मेमोरियल टूर्नामेंट में। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। KR शेट्टी किंग्स का मुकाबला होगा साई स्पोर्ट्स के साथ सुबह 9:30 बजे, और मार्ग राइजिंग स्टार्स का मुकाबला होगा अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के बीच में दोपहर को 1:30 बजे। तो ये 2 मैचेस खेले जाएंगे लीग में कल के दिन में। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं विजय पाटिल। पेविलियन इन छोर से वो आ रहे हैं, छोर बदल कर गेंदबाजी करना चाह रहे हैं कप्तान खुद नागेंद्र पाटिल। सामना करेंगे। इस बार स्लॉग स्वीप खेला है, स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद है। मिड विकेट के खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन नागेंद्र पाटिल के पास समय था, 1 रन दौड़कर पूरा किया। एक कतार में आपको 3 पाटिल नजर आएंगे। बॉलर विजय पाटिल, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर नागेंद्र पाटिल और स्ट्राइकर एंड के ऊपर रोहित पाटिल। बैकफुट पर गए, करारा स्क्वायर ड्राइव खेला, लेकिन पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड कर रहे हैं आकाश कटामड़े। 1 रन बनता हुआ 89, 7 विकेट के नुकसान, 90 फॉर 7। ओ बाहर जाती हुई गेंद का पीछा कर रहे थे नागेंद्र पाटिल। भाग्यशाली हैं कि गेंद और बल्ले का कहीं भी संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि एक खिलाड़ी रखा गया है उस संभावित कैच को दबोचने के लिए स्लिप में हार्दिक ओझा। तो ये बहुत बढ़िया गेंद, एक फ्लाइटेड गेंद के ऊपर नागेंद्र पाटिल बोल्ड हुए हैं। पूरे डिफेंस को छका कर गेंद गई। थोड़ा सा जो फासला था बैट और पैड के बीच में से गेंद गुजर गई और क्लीन बोल्ड हुए। एक ऐसे समय पर विजय पाटिल विकेट ले रहे हैं जिसकी सख्त जरूरत महसूस कर रही थी विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। 8वां विकेट का नुकसान होता हुआ नागेंद्र पाटिल को एक बहुत बढ़िया गेंद डाली, जिस पर वो डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन जो बैट और पैड के बीच में जो थोड़ा सा फासला था उसके बीच में से गेंद निकलकर बोल्ड हुए नागेंद्र पाटिल। ये बड़ा विकेट और एक सेट बल्लेबाज का विकेट मिलता हुआ। क्या यह टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है विश्व स्ट्राइकर्स के लिए? यह सवाल है, देखेंगे। लेकिन क्या बढ़िया गेंदबाजी विजय पाटिल की। पहला विकेट उनके खाते में, और वो भी सेट बल्लेबाज का विकेट उनको मिलता हुआ। और
29 रन बनाए उन्होंने, लेकिन अपना काम थोड़ा सा अधूरा छोड़ कर गए हैं नागेंद्र पाटिल। अब प्रशांत मुतकेकर आए हैं। अब 8 विकेट के नुकसान पर 90 रन, 2 विकेट दूर विश्व स्ट्राइकर्स। तो सिर्फ 16 रन दूर है जेवर गैलरी की टीम। इस मैच को जीतने के लिए जेवर गैलरी को चाहिए 16 रन, विश्व को चाहिए 2 विकेट। गेंदों का कोई सवाल नहीं है, अच्छी खासी गेंदें बची हैं, लेकिन चिंता यह है जेवर गैलरी के लिए कि वो 8 विकेट खो रही है, 16 रन उनको बनाने हैं। और इस सोच में जरूर रहेंगे विश्व स्ट्राइकर्स की टीम की बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद 8 विकेट तो ले रही है, और कुछ 2 विकेट जो बचे हैं उसको लेकर ये मैच वो जीतने की हर संभव कोशिश करेंगी। लेकिन बड़ा ही रोचक मोड़ पर यह मैच है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं प्रशांत मुतकेकर, दाएं बाई की जोड़ी मैदान पर रहेगी। विजय पाटिल राउंड द विकेट, ये गेंद छकाने में कामयाब हुए हैं। एक डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश प्रशांत मुतकेकर कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए, कोई रन नहीं बना। सुदीप सातेरी ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। उन्नीस गेंदों का खेल बाकी, 16 की जरूरत। इस गेंद को खेला है पॉइंट की तरफ, स्वीपर कवर के खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनने के बाद एक कामयाब ओवर की समाप्ति हो रही है। तो कुल मिलाकर 17वें ओवर का खेल अब समाप्त हुआ। 17 ओवर में 91 रन, 91। अब 18 गेंदों का खेल बाकी है, और इन 18 गेंदों में 15 रनों की दरकार है जेवर गैलरी डायमंड्स के लिए। प्रशांत मुतकेकर खाता खोल रहे हैं 1 रन बनाकर, रोहित पाटिल खेल रहे हैं 7 रन बनाकर। अभी भी आना बाकी है ताहिर सराफ को, लेकिन यही एक जोड़ी है जो क्षमता रखती है। अब और रोचक मुकाबला बनता हुआ। 18 गेंदों में 15 की आवश्यकता। गेंदबाजी का मोर्चा आकाश कटामले संभाल रहे हैं, दूर वाले छोर से प्रशांत मुतकेकर के पास स्ट्राइक है। आखिरी गेंद पर 1 रन उनको मिला था, इसलिए वो रहेंगे स्ट्राइकर एंड पर। यॉर्कर, ओ क्या बढ़िया यॉर्कर डाल रहे हैं, लेकिन ये 22 के 4 रन बनते हुए। खतरनाक यॉर्कर थी, लेकिन सटीक यॉर्कर थी, लेकिन 22 के रूप में ये बोनस का चौका बनता हुआ इन रनों का स्वागत कर रही है जेवर गैलरी की टीम। अब रन कैसे भी आए, रन आना जरूरी है, वो चाहे बाय लेग बाय हो, वाइड हो, नो बॉल हो, बल्ले से हो, क्योंकि रन बड़े कीमती है, मायने रख रही है जेवर गैलरी के लिए। रन संख्या बनी है अब 95, 95।
अब 11 रनों की जरूरत, 17 गेंदों का खेल होना बाकी। बेहतरीन यॉर्कर जरूर थी सीधी ब्लॉक होल में, लेकिन थोड़ी ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर सुदीप के ऊपर से गई। वो छकाने में कामयाब, अच्छी गेंद डाल रहे हैं। थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेन गेंद डाली, थोड़ी से एंगल बनाकर, कोन बनाकर गेंद को बाहर की तरफ निकालने के बाद बल्ला चला जरूर प्रशांत मुतकेकर का, लेकिन कहीं भी मिलन नहीं हुआ गेंद और बल्ले का। डॉट गेंद कराने में कामयाब। 16 गेंदों का खेल बाकी, 11 की जरूरत। अच्छी गेंद है, इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक खेला मदन बेड़गांवकर है उस शॉर्ट कवर्स के इलाके में। उन्होंने गेंद को रोका, रन की तमाम संभावनाओं को उन्होंने खत्म किया और गेंद वापस लेकर जा रहे हैं आकाश कटामड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। ये मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ, ये मैच किसी का भी हो सकता है। ओ छकाने में कामयाब हुए हैं, बहुत अच्छी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, थोड़ी जगह बनाकर उस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन इस इन कटर के ऊपर पूरी तरीके से चकमा खा गए हैं प्रशांत मुतकेकर। अब जैसे प्रशांत मुतकेकर लगातार बीट हो रहे हैं, रोहित पाटिल है उनसे कुछ बात कर रहे हैं, अपनी थोड़ी सी अनुभव की गुट्टी पिला रहे हैं इस वक्त प्रशांत मुतकेकर को। राउंड द विकेट आकाश कटामड़े, वो फिर एक बार चकमा देने में कामयाब हुए हैं। लगातार कठिन परीक्षा ले रहे हैं इस वक्त प्रशांत मुतकेकर के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं आकाश कटामड़े। लगातार बीट कराने में वो कामयाब हो रहे हैं प्रशांत मुतकेकर को। अब गेंदें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अब देखिए 13 गेंदों का खेल बाकी है और 11 की जरूरत है। अभी भी 8 विकेट खो रही है जेवर गैलरी की टीम। बड़ी सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी, उस 22 के 4 रन को छोड़कर बाकी के सब गेंदे डॉट कर रहे हैं आकाश कटामड़े। अच्छा ड्राइव खेला है, 4 रनों की सख्त जरूरत थी और क्या आला दर्जे का टाइमिंग बनाकर खेला। लगातार बीट कराने में कामयाब तो जरूर हुए थे आकाश कटामड़े, लेकिन ये तो करारा कवर ड्राइव था और इस कवर ड्राइव के चलते प्रशांत मुतकेकर के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका बहुत ही बड़ा दिलासा दे रहा है डगआउट में बैठे हुए जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम को। तो कुल मिलाकर अब 12वीं ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या बनी है 99, 8 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों का खेल होना बाकी और 7 रनों की जरूरत है। तो क्या चमत्कार करेंगे विश्वविद्यालय की टीम या फिर वो 7 रन बनाएंगे? अभी भी कुछ कह नहीं सकते। इस मैच का नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, कहना बहुत मुश्किल है। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना उचित नहीं है ऐसे समय पर जहां पर आपके पास 12 गेंदे हैं, 7 रन तो हैं चाहिए, लेकिन 2 ही विकेट बचे हैं। प्रशांत मुतकेकर, रोहित पाटिल 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। गेंदबाजी का मोर्चा कप्तान विजय पाटिल संभाल रहे हैं। अभी भी एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात है हार्दिक ओझा के रूप में। पॉइंट पर एक खिलाड़ी, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर फाइन लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन के इलाके में खिलाड़ी है। तो 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर खड़े हैं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के इलाके में। एक खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर उस फाइन लेग के इलाके में या फिर कऊ कॉर्नर कह सकते हैं उस इलाके में एक फील्डर 30 गज दायरे के अंदर खड़ा है ऑन साइड पर। ये गेंद डॉट कर रहे हैं रोहित पाटिल को। एक कदम आगे बढ़ाकर हाफ वॉली बनाना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। डॉट गेंद, 11 गेंदों में 7 रन चाहिए।
इस गेंद को ऑन साइड पर खेला है मिड ऑन के इलाके में। पहला रन बहुत तेज लिया है, दूसरे रन की मांग लेकिन नहीं। आकाश कटामले जैसे फील्डर जब गेंद के ऊपर झपट्टा मारते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज हिम्मत नहीं जुटाते रन लेने की। एक ही रन से वो संतुष्ट रहे। 100 का आंकड़ा छूने में जेवर गैलरी डायमंड्स कामयाब हुई। 100 रन उनके लिए बने हैं, अब सिर्फ 6 रन दूर। लेकिन विशुद्ध की भी तारीफ करनी होगी। अब मैच का नतीजा जो भी हो, ये खेल है, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। कोई तो टीम जीतेगी, कोई तो हारेगी, लेकिन 105 रन लेकर जो लड़ रही है विशुद्ध स्ट्राइकर्स की टीम, वो तारीफ के काबिल है। जो टक्कर दी है उन्होंने इस मैच में, उसकी तो सराहना निश्चित तौर पर करनी होगी हमें। और कोई टीम होती तो घुटने टेक देती। बैकफुट पर गए, बल्ले पर आने दिया गेंद को, उसके बाद उन्होंने इस गेंद को खेला मिड विकेट के इलाके में और मिड विकेट पर विनीत अडूरकर ने गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। वापस गेंद विजय पाटिल के पास। बैकफुट पर गए, कट शॉट खेला, बैकफुट पॉइंट के इलाके से गेंद गई है। निश्चित तौर पर यह चौका बनता हुआ, प्रशांत मुतकेकर के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 104 रन। अब सिर्फ 2 रनों की दरकार है। इस चौके की मदद से प्रशांत मुतकेकर जहां पहुंचे 9 पर, रोहित पाटिल 8 रन बनाकर खेल रहे हैं और अब सिर्फ 2 रन दूर। 1 रन मैच बराबरी पर होगा और 2 रन कुल मिलाकर ये बनाएंगे तो ये मैच जीत जाएगी जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम। जीत की वैसे भी बहुत ज़रूरत है दोनों टीम्स को वर्तमान श्रृंखला में जीवित रहने के लिए, अपना सफ़र आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज एक की जीत होगी, एक की हार निश्चित है। बैकफुट पर गए, जगह बनाकर उस गेंद को पॉइंट की दिशा में स्क्वायर ड्राइव खेला है। 1 रन बनेगा, स्कोर लेवल। अब राहत की सांस ले रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम की। बराबरी तो हासिल अब तक की है उन्होंने। 105 रन जो बना रही है विशुद्ध स्ट्राइकर्स की टीम, उस 105 रन बनाकर बराबरी कर चुकी है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम। 10 पर प्रशांत मुतकेकर, 8 रन बनाकर रोहित पाटिल। 18.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ है। कुल मिलाकर 7 गेंदें बची हैं और 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए। लेकिन एक अच्छा मैच लो टोटल का देखने को मिला। इस बार ड्राइव किया ऑन साइड पर और आकाश कटामले ने गेंद को रोका। वो रन जो चाहिए था वो लिया और 2 विकेटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुई है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम। धड़ाधड़ जो विकेट गिरे उसके बाद उनके तंबू में थोड़ी सी घबराहट जरूर थी, लेकिन अंततः जीत सुनिश्चित करने में प्रशांत मुतकेकर, रोहित पाटिल को कामयाबी मिली और उन्होंने 2 विकेटों से शिकस्त दी है विशुद्ध स्ट्राइकर्स की टीम को। लेकिन विशुद्ध स्ट्राइकर्स ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। 106 रन बनाने के लिए जेवर गैलरी डायमंड्स के खिलाड़ियों को तरसाया, लेकिन अंततः जेवर गैलरी ने वो मैच जीता। तो 106 रन 8 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर बचाकर यह मैच जीत रही है जेवर गैलरी डायमंड्स की टीम। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the
hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let me stay with you. Even asking you just one night. And I'm not your life. But tell me 'cause we still have time. I can't say what I do, but do you feel the same, don't you?
Vishnu strikers, if you can come here, we will finish up the presentation as soon as possible. Thank you. We have the guests also waiting for you. We have the guests also waiting for you. If you can come quickly, we'll finish off the presentation. Thank you. Well, boys, we are here for the presentation ceremony of the match played between Xavier Gallery Diamonds versus the Vishnu Strikers. First and foremost, I would like to invite the guests this evening. Panay, if you can just get them, Amar Sardesai, Pratap Shetty, Virendra Shetty, and Advocate Prabhakar Shetty. If you all can please come up here for the presentation. Thank you very much. We welcome you, sirs, for the presentation ceremony of the match played. Boys, if you can just put your hands together for these gentlemen who are here for the presentation ceremony. Thank you. First and foremost, I would like to talk to the losing captain. Ravi, you had a chance there. You made a match out of 105, what you had on the board. What you could have won it. What went wrong? So I would say nothing went wrong. They just played well last partnership. They were under pressure, but they took the match till the end and they finished it. The way Boyd showed character was unbelievable, but we just ended in losing up. Yes, you ended up in losing up. And to tell you that Vishnu is a very good side, and it was just your bad day. Now you have nothing much left in the tournament, but you will have a point to prove that you were one of the better teams in the tournament, and you will smash the remaining 2 matches that you have. Definitely. It's not like that we are out of the tournament. We'll give 100% every match wherever we play. Yes, I know that. And what would you like to tell your boys here? Because they played exceptionally well today. Yes, sir. They have played well. Just want to get to the next matches and come with the fresh mind. That's it. Well said. Hard luck today, but all the best for the remaining matches. Thank you, Ravi Ukli. You really entertained. You won our hearts with that performance. Trying to defend 105. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. That was Ravi Ukli, the captain of Vishnu Strikers. Now the winning captain, Majid Makandar. First and foremost, congratulations, Majid. 105, you made a match out of it? Yeah, it was a tough wicket to bat on. It was supporting the bowlers, and both the team bowlers bowled really well, and they showed the character, and that's why match came to the last over. And with this win, I hope that you can just make it. I don't know what it says. We'll have to see other matches also and how you perform in your remaining matches also. 20 in 3 overs, you are about some 30 odd runs, just 1 wicket down. The kind of start you wanted, Chetan Pangiri had given it. You could not capitalize. Maybe you could have finished in 10, 12 overs, and you could have just put all other things in place. Yeah, it's not that kind of wicket that you go and start hitting. You have to be there and you have to play some balls and then you have to capitalize it. But the way Madan Belgankar bowled was really well and he got some really quick wickets. That's why it was happened. Yes, you know, you are answering all my questions. What would you like to tell your boys? Because you have some more matches left over and maybe you have to prove a point to everyone that Xavier Gallery Diamonds were really the diamonds in the tournament. I don't know, but we have to win the last match and just wait patiently for the other teams to play. Now you are dependent on somebody else rather than you yourself. Anyway, congratulations. All the best for the remaining matches. Thank you very much, Majid. Thank you so much. That was Majid Makandar, the captain of Xavier Gallery Diamonds. Plenty of awards to be given away. First and foremost, for the best catch, this award to be given away by Mr. Pratap Shetty. If you can come forward. This award goes to best catch, Akash Pattar. If you can come in. Next one is for the maximum sixes. Thank you, Akash.
this award to be given away by Virendra Shetty, and if you can come forward, this goes to Akash Katamle. We had to decide who to be the impact player. It was very difficult for the jury, the commentators panel, and others involved with it. And this award to be given away by Mr. Advocate Prabhakar Shetty, the impact player, goes to Rohit Patil, 4 overs, 21 runs, 2 wickets. Rohit Patil, you get a beautiful trophy and also a shaker. So if you can come quickly. That is why I keep telling you, please be on your attire all the time. You never know who is going to get awards and win prizes. So you have to come. Since it was a low scoring game, it was decided by the jury that it should go to that person who bowled and fielded, also involved with the runs. But Rohit Patil, for his performance of 4 overs, 21 runs, 2 wickets. You also performed with the bat till the end. You were there and you made sure that your team won. Thank you. Last but not the least, we had to decide who to be the man of the match. Again, a tough one. But the jury decided for that wonderful performance. We see once in a lifetime kind of a performance for, though you ended up on the losing side, 4 overs, 1 maiden, 8 runs and 4 wickets. Madan Belgaonkar, Maddie, you deserved, what a wonderful piece of bowling that was. I'll just finish off with 2 words with you. First and foremost, congratulations, Maddie. Thank you very much. After a long time. After a very long time, I know that you're very excited. Long time ago, I remember playing with you and I hung up my boots. You still carry on. How does it feel, you being the senior member and taking the team along like Vishrut? Yeah, it's been great to see. It's been great, and you've been given a lot of free hand. And after a long time, you're getting 4 wickets. You missed out on 5 wicket haul? Yeah, but we are losing side. It's just something missing. Yeah, something is missing because you're ending up on the losing side. But this performance is nevertheless, you have won hearts. You really bowled very well. We can see some more performances from you like this. Yeah, we will see next. We will definitely see this, and all the best. Thank you. Congratulations. Thank you, Chetan. Thank you very much, Maddie, my co-colleague long time ago, and now a man of the match. This award to be given away at the hands of Amar Sardesai. If you can come forward, Madan. You also get a beautiful trophy and a DTH connection from Metrocast. 1 year subscription free. We thank Nagesh Chabria and CEO Sumok Chabria. It is worth 7,500. Thank you very much. Thank you very much. That is all that we have from the presentation party this evening. Thank you, Amar Sardesai, Pratap Shetty, Virendra Shetty, and Advocate Prabhakar Shetty, and impact player and man of the match. Thank you very much. That's all that we have from the presentation party this evening. Thank you and good night.